you.
चलो मैं वीडियो बंद करिए।
This video contains flashes and moving images. On the behalf of Kumaun University Innovation and Incubation Center, welcome you all to the Impact Lecture Series being organized by Kumaun University Innovation and Incubation Center. Just as energy is the basis of life itself and ideas the source of innovation, so is innovation the vital spark of all human change, improvement, and progress. Innovation distinguishes between a leader and a follower. Today, we will have two renowned speakers, Professor Alka Goel, GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, and Professor Subhash Chandra, Chanakya Law University, Patna, India. Before Dr. Chabi Arya, Coordinator Impact Lecture Series, to welcome all our participants and introduce of this lecture series. Good morning, everyone. A very good morning to all present. Honorable Vice Chancellor, Sir, Kumaun University, Nainital, Professor N.P. Joshi, Sir, our keynote speaker for the second session of this Impact Lecture Series, Professor Alka,
Professor and Dean, College of Home Science, Science, GB Pant University Agriculture and Technology, of Agriculture and Technology, Director, Incubation Innovation and Incubation Center, Kumaun University, Nainital, Dr. Pushpa Convener, Ma'am, Kumaun Convener, University Innovation and Incubation Center, Dr. Neelu Rodial ma'am, all senior professors, and all our colleagues who are here with us to attend this session, all members of organizing committee of Kumaun University IIC, my dear students and participants, it gives me immense pleasure to welcome you all to the first Impact Lecture of the second session of this Impact Lecture series. Just to brief the participants about what we did in the first session of this Impact Lecture series. The first session of the Impact Lecture series was held on 13 June 2022, where we had two keynote speakers, Professor Manu Sharma, Honorary Director, Center for Industry Institute Partnership Program, University Institute of Engineering and Technology, Punjab University, Chandigarh, and Sir spoke on the topic how to do techno-entrepreneurship. And the second speaker was Mr. Rajat Jain, Founder and Managing Director, Sunfox Technologies, who spoke on the topic roller coaster ride of a student to startup. Both the lectures of the first session were highly informative. They also provided practical wisdom and were very well dealt by our keynote speakers. This Impact Lecture series is being organized by Kumaun University Innovation and Incubation Center at Nainital, Uttarakhand, and is supported by Ministry of Education's Innovation Cell and All India Council of Technical Education. On behalf of the entire team of Kumaun University Innovation and Incubation Center, I'd like to thank and extend our gratitude to our Honorable Vice Chancellor, Kumaun University Nainital, Professor N.K. Joshi ji, for providing us the platform and the facilities for conducting this Impact Lecture series. His constant motivation and encouragement in organizing the activities of Kumaun University IIC are highly appreciated. Today, 277 participants have registered for this Impact Lecture series. Coming back to our first lecture. So our very first keynote speaker for the second session of this Impact Lecture series is Professor Alka Goel ma'am, who is presently working as Dean, College of Home Science, GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar. Ma'am is an eminent academician, leading women scientist in the field of fiber technology, clothing and textile, and has also successfully shouldered several important administrative responsibilities at GB Pant University of Agriculture and Technologies and several other key institutes. Today, ma'am will speak on the topic technical textiles for innovative entrepreneurship. Textile industry provides huge employment for both skilled and unskilled labor in India and contributes greatly to employment generation. Clothing and textile sector has tremendous potential for innovation and entrepreneurship. I am sure the knowledge and information provided by ma'am during her lecture will be useful for our participants, and it will be especially beneficial for those students who have an entrepreneurial idea in the field of textiles. Thank you. I now hand over the mic to Dr. Harsh. Thank you, ma'am. Well, innovation is fostered by information gathered from new connections, from insight gained by journeys into other disciplines or places, from active collegial network and fluid and open boundaries. Innovations arise from ongoing circle of exchange where information is not just accumulated or stored, but created. Knowledge is generated anew from connections that were not there before. I find immense pleasure to introduce our keynote speaker, Dr. Alka Goel. She is presently Professor and Dean, College of Home Science, GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar. She has several recognized awards and honors, such as National Fellow Award 2005, as well as in 2010. She also received Punjab Rao Deshmukh Women Agriculture Science Award in 2006, Hariom Ashram Trust Award by ICAR New Delhi for outstanding contribution in the field of social science, and
Shiksha Ratna Puruskar for meritorious services and outstanding performance. She is recognized as an outstanding staff member by the G.V. Pant Agriculture University of Agriculture and Technology on the Foundation Day in 2004. She has published several articles in journals of national and international rapport. She has, no doubt, she has several accomplishments. Well, without taking much time, I invite Professor Alka Goel for his keynote lecture. Ma'am, over to you. Okay, thank you, Dr. Ha. Thank you, one and all, for giving me this platform to join a gathering that is very important to communicate. And I used to be a part of Kumaun University in terms of examiner or some like that, a board faculty member like that. So it's my pleasure to join this platform. And today, as Dr. Chavi, she's also our student. I'm happy to say that, alumni of this place. So with her request, I just gave one topic that is regarding the technical textiles. And I would like to share my presentation also in this regard. And important thing is what I am going to tell, that is has captured a very wide market today, and it is increasing day by day. So there is very large scope, and problem is the end user is not having the idea of that. Therefore, I took this especially I selected this topic, that is the technical textiles. As we know that just when we say the technical word, that means it is concerning with a lot of technical things, but it is not like that. Any person having the basic understanding can go ahead with this. So a number of fields I am going to tell you about that. So I would like to share my presentation first. Entire screen नहीं half नहीं होगा. उसमें भी खोल देना. फुल नहीं हो रहा. Anyways, okay, so when we talk about technical textiles, this technical textiles and products, the basic difference between technical textiles and the conventional textiles, as we know, the garments we wear, the household linens or the furniture articles made with the textile materials, those are all the conventional textiles. But why this term was coined? That was coined in 1980, around 40 years back. And main importance or main key feature about the technical textiles, that is, it is primarily related to technical and performance properties of any textile material. It is not related to decorative or aesthetic properties or characteristics of the textile materials. Therefore, this is how it is different from the conventional textiles. No, please, after 1 hour. So, whenever we talk about this, so technical and performance articles, that is very, very important. And most of the times, these articles are very costly because we need to have their performance up to the satisfying level or up to the standards that has to compete. Therefore, there is wide scope in this field, which is not very old. It is just 40 years.
since it was started. Other related terms to the technical textiles when we talk about, that is the industrial textiles, high performance textiles, functional textiles, high-tech textiles, engineered textiles, composite textiles. These all are one or the same type of textiles when we talk about the textiles. Therefore, we can see that the horizon of textiles has increased immensely. There is no limitation for textiles. In each and every part of our life, textile touches it. So to go about the technical textiles, one thing I would like to know, अगर आप लोग चाहें तो मेरे को हिंदी भी बहुत अच्छी तरह आती है और हम लोग बोलते हैं हमेशा. अगर आप कहें तो मैं हिंदी में भी बोल सकती हूँ. प्लीज. यस मैम प्लीज. हिंदी में बोलना है इंग्लिश में बता दीजिए. नहीं, मैं कंफर्टेबल दोनों में हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं. प्लीज स्टूडेंट्स के हिसाब से मुझे लगता है. प्लीज लेट मी नो. जिसमें आपको ठीक लगे उसमें मैं बोलना पसंद करूंगी. हेलो. हाँ मैम ठीक है, आप हिंदी में कंटिन्यू कीजिए प्लीज. अच्छा ठीक है, ओके. तो जब हम यस अलका मैम, यस अलका मैम, आप अच्छा. हिंदी में करिए, बहुत अच्छा लेक्चर जा रहा है. ठीक है, ओके. थैंक यू मैडम, थैंक यू. सो टेक्निकल टेक्सटाइल्स के बारे में जब हम बात करते हैं, जो मैंने अभी आपसे कहा कि इसमें हम कॉस्ट की चिंता नहीं करते हैं, इसमें हम ये देखते हैं परफॉर्मेंस बिल्कुल अप टू डेट होनी चाहिए. शायद आप लोगों ने कभी सुना होगा कि जो बॉम्बे में जब वो हुआ था टेरर अटैक, उस समय पर जो हमारे आर्मी के और उसके जो फोर्स के लोग थे, उन लोगों की जो जैकेट्स थी वो वैसे तो उसकी एरामिड फाइबर की बनी हुई थी और उनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए थी कि वो बुलेट प्रूफ होनी चाहिए थी. लेकिन उसके बाद भी मिस्टर कामत और एक दो लोगों की मैंने पढ़ा था कहीं कि उनकी बुलेट प्रूफ नहीं हो पाई थी, तो अंदर बुलेट चली गई थी एंड वन ऑफ देम वर डाइड ड्यू टू दैट. तो आप इसकी इम्पोर्टेंस इस बात से समझ सकते हैं कि अगर इसकी परफॉर्मेंस में कहीं पर भी कोई कमी हो जाती है तो वो इंसान की ज़िंदगी के लिए भारी हो सकती है. इसलिए जब भी हम टेक्निकल टेक्सटाइल्स की बात करते हैं तो उसमें हमको पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंस परफॉर्मेंस के ऊपर होती है, क्योंकि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो सब चीज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब हम ये देखेंगे कि टेक्सटाइल टेक्सटाइल्स किस किस पार्ट को हमारी लाइफ में टच करता है. इसमें आता है एग्रीकल्चर, पूरा का पूरा एग्रीकल्चर, क्लोथिंग. लेकिन क्लोथिंग में ये नहीं है कि जो मैंने साड़ी पहनी हो ये भी टेक्निकल टेक्सटाइल्स है. नहीं, ये टेक्निकल टेक्सटाइल्स नहीं है. उसमें कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं क्लोथिंग के, वही टेक्निकल टेक्सटाइल्स की क्लोथिंग के अंदर आएंगे. इसी तरीके से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, हेल्थ केयर या मेडिकल, जो हम आजकल अभी कोविड के समय में बहुत ज़्यादा हेल्थ एंड हाइजीन पर ध्यान दिया गया, उसमें ज़्यादातर सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री ने फ्लरिश किया है वो थी मेडिटेक या मेडिकल टेक्सटाइल्स. उसमें बहुत ज़्यादा मल्टीफोल्ड उसमें फ़ायदा हुआ है. देन ट्रांसपोर्टेशन. इन ट्रांसपोर्टेशन में जब हम बात करते हैं तो इसमें रोडवेज, एयरवेज और रेलवेज सब कुछ आता है इसके अंदर. पैकेजिंग एक ऐसा फील्ड है जो कि आप देख रहे होंगे, हम जितना जो कुछ खाते पीते हैं सब कुछ आजकल पैकेट में आने लगा है. स्पोर्ट्स टेक्सटाइल्स, पहले एक जोड़ी शूज हुआ करते थे, अब बच्चों के पास 4-5 जोड़ी कम से कम हुआ करते हैं, हर स्पोर्ट के लिए अलग तरीके के, या गारमेंट्स वगैरह भी, ड्रेसेस हर तरीके की होती हैं. अनदर इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगला है प्रोटेक्टिव वेयर, जैसे कि फायर फाइटर्स की ड्रेस है, या इस तरीके से जितने भी इमरजेंसी सर्विसेज के लिए चाहिए होते हैं वहाँ पर में प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल्स की ज़रूरत होती है, उसको हम प्रोटेक्ट कहते हैं. और बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें कि हमारी टेक्सटाइल्स इम्पॉर्टेंट रहती है. डेवलप्ड कंट्रीज में अगर हम देखते हैं तो 40% टोटल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज चलती हैं, जिसमें कि यूएस और यूरोपियन कंट्रीज का एक बहुत बड़ी भागीदारी है. और अब हम देख रहे हैं लास्ट 10 ईयर्स में चाइना ने भी बहुत अपना शेयर इंक्रीज किया है. लेकिन इसके बावजूद लास्ट 5 ईयर्स में अगर आप डेटा देखेंगे
तो इंडिया और रशिया ने काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मार्केट अपना होल्ड किया है इसमें टेक्निकल टेक्सटाइल्स में। और अभी आप यूक्रेन की भी सुनते होंगे न्यूज़, तो उसमें आप देख रहे होंगे हर चीज़ में टेक्निकल टेक्सटाइल्स का उपयोग किया गया है, जो हम आगे जाकर थोड़ा टच भी करेंगे। अब यहाँ पर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बताती हूँ मैं कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स 12 तरीके की हैं, और इसे देखकर आपको पता चलेगा कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें कि टेक्सटाइल का दखल नहीं है। तो सबसे पहला है हमारा एग्रोटेक। एग्रोटेक का ये पहला वो है सिंबल है, और इसमें आप देख रहे होंगे कि जैसे गेहूं की बालियां इस तरीके की होती है। एग्रोटेक के अंदर हॉर्टिकल्चर, लैंडस्केप गार्डनिंग, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड A to Z हर फील्ड में हमारा टेक्निकल टेक्सटाइल्स का उपयोग आजकल होने लगा है। थोड़ा डिटेल में आपको आगे जाकर के बताऊंगी इसके बारे में। इसके बाद दूसरा है हमारा बिल्डटेक। बिल्डटेक के बारे में मतलब कि एक इसमें आप देख सकते हैं एक छोटा सा मकान से या हट टाइप की बनी हुई है, इसका सिंबल यही है। ये है मेम्ब्रेन कंस्ट्रक्शन, लाइट वेट एंड सॉलिड स्ट्रक्चर्स, सिविल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन, टेम्परेरी कंस्ट्रक्शंस, इंटीरियर कंस्ट्रक्शन, अर्थ वर्क्स, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड रोड कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर कंस्ट्रक्शन। यानी कि इसके अंदर भी जो आप सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित जितने भी आप कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क्स देखते हैं वो सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, और वहाँ अब हर जगह पर टेक्निकल टेक्सटाइल्स का उपयोग होता है। इसमें एक बहुत सिंपल बात मैं आपको कहूँ, आजकल अगर हम जब बिल्डिंग्स बनाते हैं कोई भी चीज़ अर्थक्वेक प्रोन आपने सुना होगा, और या आप ये देखते हैं जब केदारनाथ जी में जब ये दुर्घटना हुई उस समय पर कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी। तो हमारे जो आजकल के हाउस होल्ड स्ट्रक्चर्स हैं ये भी इम्पॉर्टेंट हो गया है कि वो स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, ताकि कभी कोई प्रॉब्लम आई, कोई ट्रेजेडी हो तो उस समय पर इंसान उसके नीचे दबे भी तो उसे ज़्यादा चोट ना आए। लाइट वेट होने चाहिए लेकिन स्टडी या मजबूत होने चाहिए। तो ये सारा का सारा हमारा बिल्डटेक के अंदर आता है। फिर हम अगला चलते हैं क्लोथटेक। क्लोथटेक के अंदर हमारा क्लोथिंग एंड शूज़। क्लोथिंग का मतलब जो हमारा फ्यूजिंग होता है, जैसे कॉलर्स वगैरह है, पहले हम उसमें बकरम लगाते थे, सब करते थे, अब वो सब रेडीमेड आते हैं, सिर्फ हमें उसे प्रेस करना होता है, गर्मी के कारण वो अच्छे से चिपक जाता है और फाइनल शेप ले लेता है अपने आप। इसी तरीके से शूज़ हैं, शूज़ के अंदर एक एक चीज़ कम से कम भी नहीं तो 8 to 10 कंपोनेंट्स होते हैं एक शू के अंदर, और उसे अगर आप देखेंगे सब में टेक्निकल टेक्सटाइल्स का पूरा उपयोग किया हुआ होता है। नेक्स्ट इज रोड कंस्ट्रक्शन। ये आता है जियोटेक। Geotech is related to road construction, civil engineering, dam and waste site construction। यानी कि हमारा जितना भी बड़ा कंस्ट्रक्शन होता है, डैम्स में होता है, रोड कंस्ट्रक्शन होता है, वेस्ट साइड का बड़ा बड़ा, आप दिल्ली वगैरह गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो सॉलिड गार्बेज का बड़ा बड़ा हिल्स जैसा आपको दिखता है, वो सारा का सारा जियोटेक के अंदर में आता है, और वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए भी काम में लिया जाता है। तो इन सब की बड़ी अपनी उपयोगिता है, और अगर आप इसे देखें, इसका जो सिंबल है वो भी आपको एक इसी तरीके से डैम टाइप का आकृति इसमें दिखाई देगी। नेक्स्ट इज होम टेक। होम टेक का मतलब है फर्नीचर, अपहोस्ट्री, इंटीरियर डिजाइन, कारपेट्स, रग्स, फ्लोर कवरिंग्स वगैरह वगैरह। हम जब पहले यूज करते थे ये सब चीजें, तो थोड़े समय बाद प्योर वुल के जो वो होते थे कारपेट्स, वो थोड़े समय बाद खराब हो जाते थे। अब उसमें क्या है, सिंथेटिक लाइनिंग पीछे से लग करके आने लगी है, जिससे वो जमीन से अपना जो मॉइस्चर वगैरह है वो नहीं लेते हैं, तो बैकिंग आने लगी है, उसकी वजह से उसकी लाइफ बढ़ जाती है। और दूसरी चीज उसके वॉशिंग, आजकल आपने देखा सिंथेटिक रग्स भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है, उनको आप धो सकते हैं, जिससे कि जो माइक्रोबियल हैजार्ड्स थे वो नहीं होता है, वो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर दी जा सकती हैं, फिनिशेस भी होती हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखते हैं कि जो आपका फर्नीचर वगैरह है उस सब के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगा है टेक्निकल टेक्सटाइल्स का। नेक्स्ट इज इंडोटेक। इंडोटेक का मतलब ये है इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स। इंडस्ट्रीज के अंदर यहाँ पर आपने देखा होगा गेयर्स जैसे आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन, क्लीनिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, एटसेट्रा एटसेट्रा, कई सारी जगहों पर इसका यूटिलाइजेशन होता है। अगला है
मेडिटेक जो है वो पूरा का पूरा हाइजीन और मेडिसिनल फील्ड उसको कवर करता है। और जैसा भी मैंने आपको बताया, कोविड के समय में जितने भी आपने ये क्या थे मास्क वगैरह पहने, जो आपके डिस्पोजेबल आइटम्स थे, वो सारे के सारे आपके नॉन वोवन से बने हुए थे। और नॉन वोवन टेक्निक यूज की जाती है टेक्सटाइल गारमेंट्स को बनाने के लिए। तो इसके लिए आपने यहाँ पर देखा कि मेडिकल टेक्सटाइल्स की बहुत बहुत ज़्यादा उपयोगिता है, और ये ज़्यादातर डिस्पोजेबल हैं। जैसे कोई ऑपरेशन वगैरह करते हैं, वो करते हैं, तो उसके बाद किसी भी तरीके से कोई इन्फेक्शन ना आए, तो उसके लिए इसको बाद में डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती है, तो उसको ईजिली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। नेक्स्ट जो टेक्निकल टेक्सटाइल कवर करता है वो है मोबाइल टेक। मोबाइल टेक का मतलब हो गया ऑटोमोबाइल्स, और इसके अंदर आता है आपका कार्स, शिप्स, एयरक्राफ्ट्स, रेलवे, स्पेस ट्रेवल एटसेट्रा एटसेट्रा। आजकल अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल अपनी डे टू डे लाइफ के लिए लें, तो हम देखते हैं कार के अंदर कितनी तरीके के अब फैसिलिटीज आ गई हैं। तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं हमारी, वो सब पॉसिबल हुई हैं सिर्फ टेक्निकल टेक्सटाइल्स की वजह से, जिससे कि अब इसके अंदर आपके वो बैग्स क्या कहते हैं, एयर बैग्स हैं, और बाकी भी बहुत तरीके की चीज़ें हैं, उस कवर्स हैं, सीट कवर्स हैं, ये सारे हैं। ये सारे के सारे आपके हाइजीनिक होते हैं, रिप्लेसेबल होते हैं, और कॉस्ट वाइज कम पैसे के होते हैं। नेक्स्ट इज ओकोटेक। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स में, क्योंकि आजकल एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना एक समय की ज़रूरत है, और टेक्सटाइल्स भी इसमें पीछे नहीं है। इसमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए हम जिस भी आइटम को यूज़ करते हैं, जिस भी टेक्निक को यूज़ करते हैं, उसको हम ओकोटेक के अंदर कहते हैं। और ओकोटेक के अंदर आप देख रहे हैं एक ट्री बना हुआ है, और उसके ऊपर शायद ओजोन लेयर दिखाई हुई है, which should not be depleted। तो इसके अंदर हमारा रिसाइकल, जो हमारे 4 मेन फीचर्स हैं, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रिकवर, ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर कवर होते हैं, और इसमें वेस्ट डिस्पोजल टेक्निक्स को भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज पैकटेक। पैकटेक के अंदर आता है पैकेजिंग मटेरियल्स। ये जो हम आजकल जो भी कुछ इस्तेमाल करते हैं, सभी कुछ पैकेज में आता है, पैकेट्स में आता है। तो वो सारी चीज़ें इसमें, सैक्स, बिग बैग्स, कंटेनर सिस्टम्स। अभी ट्रेन में गई थी मैं, तो सब कुछ जो वहाँ पर मिला, सब कुछ पैकेट में मिला हुआ था। चाय वगैरह भी थी, तो वो भी डिस्पोजेबल्स में थी। स्पून्स थी, वो सब डिस्पोजेबल में थी। तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं, स्पून जो आई भी थी, तो वो एक पैकेट के अंदर करके आई थी, ताकि वो हाइजीनिकली बिल्कुल सेफ रहे। तो अगर हम ऐसी चीज़ों को देखते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि टेक्सटाइल का जो वेस्ट, जो यूज़ है, वो कितना ज़्यादा बढ़ गया है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मतलब पर्सनल सेफ्टी एंड प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, और इसमें हमारा जितने भी जो मैंने भी बताया आप लोगों को, फायर फाइटर्स वगैरह की जो ड्रेसेस हैं, वो सारी की सारी इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट इज स्पोर्टेक। स्पोर्टेक में शू आपको दिखाया हुआ है। स्पोर्ट एंड लेजर, एक्टिव वेयर, आउटडोर इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड आउटफिट्स, स्पोर्ट फुटवेयर, ऑल दीज थिंग्स विल बी कवर्ड अंडर स्पोर्ट्स वेयर। अभी मैंने अभी आपको बताया था कि लगभग 40 साल पहले टेक्निकल टेक्सटाइल स्टार्ट हुआ था, इसका यूज होना या इसका बनना, और 2000 तक इसका जो एप्लीकेशन था, वो आप इसको देख सकते हैं इस ग्राफ में, कि इसमें सबसे ज़्यादा दिखाया हुआ है आपका मोबाइल टेक और पैक टेक का 15%, और बाकी सब उससे थोड़ा नीचे। होम टेक भी ज़्यादा है, दैट इज 13%। इंडूटेक, इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स, वो भी 13% है। अब हम आगे देखेंगे कि 22 ईयर्स में, मतलब 2000 से लेकर के 2022 में कितना ज़्यादा डिफरेंस आया है इसको यूज़ करने के लिए। तो जो मैं आपको कह रही हूँ, इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए या एंटरप्रेन्योरल, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा खास कोई टेक्निकल इनपुट देकर ही बनाएं। आप अपने दिमाग को यूज करके और कुछ अभी मैं आप लोगों को आगे जाकर के ये भी बताऊंगी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने बहुत सारे हमारे जो इंडिया में है, वहाँ पर टेक्निकल हेल्प के लिए सेंटर्स खोले हैं, जो कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से सीधा गवर्न होते हैं, और उसमें आम आदमी भी कभी भी जाकर के ऑन पेमेंट बेसिस सब तरीके की सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। तो जो मैं आपको कह रही थी, एंटरप्रेन्योरशिप, आप इससे कोई आइडिया ले सकते हैं, अपना कुछ जनरेट कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं,
और उसके बाद फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसको अगर हम देखेंगे तो जो 2013 से लेकर के 2023 जो अब कमिंग ईयर है, मतलब एक्सपेक्टेड ईयर का जो 10 साल का इसमें ग्रोथ दिया हुआ है हमारा, तो इसमें कंपाउंड एवरेज ग्रोथ रेट, एनुअल ग्रोथ रेट, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दैट इज अराउंड 12%। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटिंग ग्रोथ रेट है। 12% बहुत अच्छी ग्रोथ रेट है। और इसमें अगर आप देखते हैं तो 2013-14 में जो हमारा टेक्निकल टेक्सटाइल्स के लिए यूएस डॉलर्स में, यूएस डॉलर मिलियन टन्स में जो 10,900 था, वो 23 मतलब कमिंग ईयर जो अप्रोचिंग ईयर है उसमें वो 40,000 होने वाला है। तो एक ये 12% की जो ग्रोथ रेट है, ये बहुत बड़ी ग्रोथ रेट है और इसमें आप सब भी जुड़ सकते हैं। इसमें अब आप देखिए एप्लीकेशन वाइज ब्रेकअप, ये मैंने इंडियन मार्केट का लिया, वर्ल्ड का तो बहुत डिफरेंट था क्योंकि हम अपने इंडिया में बैठ करके बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो आप लोग देखते हैं स्टार्टअप्स के लिए जो अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छी स्कीम्स स्टार्ट की हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे स्टार्टअप्स अपने इंडिया में जा रहे होंगे, आपने नाम भी सुने होंगे, आपने शायद सुना भी होगा 19 साल के जो लड़के हैं जिनका जेप्टो स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल बिलियनियर्स हो गए हैं वो 1.5-2 साल के अंदर। तो इस तरीके से अगर इसमें से कोई भी इंसाइट किसी को क्रिएट होता है तो वो अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। और इसलिए मैंने आपको डेटा देने के लिए बताया है कि यहाँ पर हमारा इंडिया में सबसे ज़्यादा जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स का मार्केट है वो पैक मतलब पैकेजिंग टेक्सटाइल्स के मामले में है। और इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको एक तो रेलवेज का दिया, इसी तरीके से अगर आप बाई एयर जाते हैं तो आप देखते हैं आपका खाना पीना सब कुछ पैक्ड आता है। इसी तरीके से अगर हॉस्पिटलाइज कोई होते हैं, हॉस्पिटल के अंदर हर चीज़ आपकी डबल पैकेट में, ट्रिपल पैकेट्स में आती हैं, जितना आप देखेंगे डायलिसिस के पैकेट्स वगैरह, ताकि वो बिल्कुल जर्म फ्री रहें। तो इस तरीके से इतना ज़्यादा पैकेजिंग मटेरियल यूज़ होता है, इसका बहुत बहुत बड़ा मार्केट है अपने इंडिया में। और इसके लिए गवर्नमेंट ने अपना जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाया हुआ है, मैं आपको आगे बताऊंगी। इसके बाद दूसरा आता है हमारा इंडूटेक। इंडूटेक का मतलब है इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स, और इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स जिसमें कि कन्वेयर बेल्ट्स हैं, फिल्ट्रेशन मटेरियल्स वगैरह हैं, ये सब का बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो ये हमारा इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज मोबिल टेक। मोबिल टेक का मतलब है कि जो ऑटोमोबाइल्स है, तो कार वगैरह है, कार है, एयरवेज है, ये है रेलवेज है। अब आप देखते हैं कितनी अच्छी तेजस ट्रेन अगर आपने देखी होगी, इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रेन, और अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं वो क्या बढ़िया फैसिलिटीज़ हैं। हाँ, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें अब अवेलेबल हैं हमारे देश में भी, और स्टार्टअप की वजह से ज़्यादातर जितना भी रॉ मटेरियल है वो भी इंडिया में ही बनने लगा है। तो क्योंकि बनने लगा है इसलिए मिलने लगा है, और रेट वाइज भी काफ़ी ठीक है। तो आप उसको आसानी से कोई भी चीज़ अगर आप सोचते हैं जा सकते हैं उस फील्ड में। अगला है स्पोर्ट टेक, फिर क्लोथ टेक। इस तरीके से करते करते ओकोटेक को थोड़ा कम मात्रा में हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट इज इंडियन टेक्सटाइल मार्केट सेगमेंट वाइज। ये 2017-18 में किस चीज़ का कितना था, तो इसके अनुसार आप फिर वही देख सकते हैं कि एग्रोटेक मतलब एग्रीकल्चर टेक्सटाइल्स। अभी आप लोगों ने देखे होंगे पॉली हाउसेज, देखे होंगे आपने, जो मल्च बैट वगैरह है, जो कवरिंग मटेरियल्स हैं, जितने भी विंटर्स, बहुत ज़्यादा विंटर्स होते हैं, आपने यूरोपियन कंट्रीज़ में देखा होगा ज़्यादातर समय बर्फ़ पड़ी रहती है, लेकिन जब उनके जो फील्ड्स वगैरह होते हैं वो उसमें से कवरिंग मटीरियल हटाते हैं, वो एकदम बढ़िया ग्रीन दिखते हैं। तो ये सब का कारण है क्योंकि वो इसका टेक्निकल टेक्सटाइल मटेरियल्स का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। और अब हमारे देश में भी इन चीज़ों की अवेलेबिलिटी भी है और उपयोगिता भी है, और इसलिए इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। तो एग्रोटेक का बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप है। फिर बिल्डटेक, जो बिल्डिंग्स बनती हैं, आपने अगर बड़े शहरों में देखा होगा, जो बिल्डिंग्स बनती है, बिल्डिंग के सामने ऊपर से आपने देखा हो ग्रीन कलर का पूरे टेक्सटाइल मटेरियल से उसको कवर किया होता है। वाई? जिससे कि बिल्डिंग के बनने समय जितने भी जो सीमेंट वगैरह के जो फाइन पार्टिकल्स हैं, किसी को अस्थमा ना हो जाए, किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ना हो जाए, इस तरीके से नुकसान ना हो दूसरे लोगों को, इसलिए वो पूरे के पूरे बिल्डिंग को आगे से शेड कर देते हैं। तो इस आप देखते हैं डे टू डे में भी आपके ये सारे टेक्निकल टेक्सटाइल्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगे हैं।
इसी तरीके से इंडोटेक है, जियोटेक है, होम टेक है, इन सब में भी टेक्सटाइल्स का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। अब हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पर जो टेक्सटाइल का हम एक्सपोर्ट करते हैं, टेक्निकल टेक्सटाइल्स हमारे देश में 2014 से लेकर के 5 साल के अंदर लगभग जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो 4% था। और अब लास्ट 2 इयर्स तो कोविड में चले गए खैर, लेकिन उसके अलावा जो हमारी ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा सब्सटेंशियल है और अब इसमें काफ़ी अच्छे चांसेस भी हैं। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स है वो इसमें बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, टेक्निकल टेक्सटाइल्स के वो प्रोजेक्ट्स आपसे इनवाइट कर रहे हैं। तो अगर किन्हीं को थोड़ा इंटरेस्ट है तो वो अपना इस तरीके से प्रोजेक्ट्स डाल सकते हैं। और जितने भी इनके एसोसिएशंस हैं, टेक्सटाइल टेस्टिंग और रिसर्च एसोसिएशंस, वहाँ पर हेल्प मांग करके अपना सारा काम बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, जो कि आपका बिल्कुल वर्ल्ड लेवल का होगा। इस बात की मुझे खुशी है कहने में कि हमारे इंडिया में इतने बढ़िया तरीके से सारे स्टैंडर्ड्स को अब फॉलो किया जा रहा है कि वर्ल्ड लेवल पर भी उसकी डिमांड है। नेक्स्ट इज इंपोर्ट्स ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स फ्रॉम इंडिया। जो हम इट इज नॉट फ्रॉम, इट शुड बी फॉर इंडिया। इंडिया में हम कितना इंपोर्ट करते हैं वो अभी इसमें डबल है। 4 सालों में आप देखेंगे जो हमारा इंपोर्ट था वो 4% था और जो हमारा ये इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट 4% था, इंपोर्ट हमारा 8% है। तो हम इस इंपोर्ट को कैसे नीचे लाएं? तो एक फैक्टर ये भी हो गया, अगर हम अपने यहाँ का रॉ मटेरियल जो कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स में इस्तेमाल होता है उसको अगर हम बनाने लगे यहीं पर, तो भी वो एक बहुत बढ़िया वेंचर है, वो भी काम किया जा सकता है। और उसके लिए नेचुरल टेक्सटाइल्स भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जहाँ से हम इंडिया वाले अपना एक्सपोर्ट किया हमने टेक्निकल टेक्सटाइल मटेरियल्स का, तो वो कहाँ कहाँ को हमने एक्सपोर्ट किया है। वो डेस्टिनेशंस हैं हमारे यूएसए है और यूरोपियन कंट्रीज में बहुत सारी जगह आप देख सकते हैं, नीदरलैंड्स, जर्मनी, देन फ्रांस, स्पेन, इटली, यूके एटसेट्रा। यूएई में भी है, मिडिल ईस्ट में भी है और एशियन कंट्रीज में है, चाइना में, फिलीपींस एटसेट्रा एटसेट्रा। रॉ मटेरियल्स वगैरह हम उनको बना करके दे सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज शोइंग द टॉप इंपोर्ट सोर्सेज, जहाँ से कि हम इंपोर्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा तो हम करते हैं यूएस से भी करते हैं, देन अपने एशियन कंट्रीज से करते हैं और इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज में जर्मनी का नाम इसमें प्रमुख है। देन लीडिंग कंट्रीज जो कि स्पेशलिटी फाइबर्स जो इंडिया जहाँ से लेता है, तो इनका यूएई से लेकर के सिंगापुर तक ज़्यादातर जगहों से हम अपना एक्सपोर्ट करते हैं, अपने यहाँ से फाइबर्स बाहर भेजते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत तरह के नेचुरल फाइबर्स इंडिया में बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं। आईसीआर ने इनके स्पेशल करके सेंटर्स बनाए हुए हैं, जहाँ की इनके ऊपर लगातार रिसर्च होती रहती है और रिसर्च के बाद जो उसके फीडबैक्स होते हैं वो सारे के सारे पॉलिसी प्लानर्स के साथ शेयर किए जाते हैं और फर्दर यूटिलाइज किए जाते हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में एज पर एंड यूज। एक ये जो मैं आपको बता रही थी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में, जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स है हमारे यहाँ का, उन्होंने बहुत सारे सेंटर्स बनाए हैं, जिनमें कि जैसे कि नंबर 1 जो इसमें दिया हुआ है आप देख सकते हैं, अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, इसे हम शॉर्ट में कहते हैं अटीरा, मंत्रा, निट्रा, बिट्रा, सिट्रा, सासमीरा एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सब के फुल फॉर्म है। और इन्हें आप ये देखते हैं कि यहाँ पर कहीं पर ये सूरत में भी है। इसी तरीके स्पोर्ट टेक पर जो काम होता है वो थाने महाराष्ट्र में होता है। मुंबई में जो बट्रा है, बॉम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, वहाँ पर जियो टेक्सटाइल के ऊपर स्पेशल रिसर्चेस की जाती हैं। फिर सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स, इसको हम रिसर्च एसोसिएशन, इसको हम सासमीरा कहते हैं, ये भी मुंबई में है। यहाँ पर एग्रीकल्चर टेक्सटाइल के ऊपर क्या क्या नए सारे के सारे काम किए जाते हैं, जिससे कि अवेलेबिलिटी भी हमारे इंडिया में काफ़ी बढ़ गई है। और अब हमारे यहाँ हमारे यहाँ पंतनगर में भी इन पर काफ़ी काम हो रहा है। कॉलेज में भी हमारे जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छा काम इस पर कर रहे हैं। टेक्निकल टेक्सटाइल्स में मल्च मैट वगैरह बनाने का काम हमारे यहाँ चल रहा है, क्योंकि इसमें हमारी यूनिवर्सिटी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। बाद में हम उसका ये
पेटेंटिंग के लिए भी दे देते हैं और साथ में शेयर भी करते हैं जनरल गांव वालों के साथ, जो एग्रीकल्चर जो फार्मर्स हैं उनके साथ हम इसको शेयर भी करते हैं। देन नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, वहाँ पर प्रोटेक्ट जो कि प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल्स है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जान को बचाने के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर यहाँ गाजियाबाद में काम किया जाता है। तो आप ये देख रहे हैं कि कोई भी चीज़ जो भी मैं आपको बता रही हूँ कहने के लिए टेक्निकल टेक्सटाइल्स है, लेकिन बहुत ईजी है और सबकी विद इन रीच है। अगर आप इन सब का, आपको नेट में सबका बहुत अच्छा डिटेल मिलेगा अगर आप देखेंगे, और कुछ अगर क्वेरीज होंगी मुझसे भी बात कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, जिसको ये इजीरा कहते हैं। ये आपको पता है कि जो हमारा वेस्ट बंगाल है वो बहुत रिच है नेचुरल फाइबर्स में और स्पेशल करके जूट में। तो पहले तो हम सिर्फ जो जूट के बोरे होते थे वही बनवाया करते थे, लेकिन आज की डेट में जूट की जो ड्रेसेस है, फैशन ड्रेसेस, वो भी बनती हैं, और उसके अलावा बहुत सारे जियो टेक्सटाइल्स में जूट का विशेष कंट्रीब्यूशन है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। देन साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, जिसको कि हम सिट्रा कहते हैं, यहाँ पर मेडिकल टेक्सटाइल्स में काम किया जाता है, कोयम्बतूर में सिचुएटेड है। तो इस तरीके से कुछ सेंटर्स मैंने आपको बताए। इसके अलावा अगर हम मेजर मार्केट्स देखें अपने इंडिया का, तो आप इसमें ये देख सकते हैं कि जो यूएसए है, फॉलोड बाय यूएई, देन इंडोनेशिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम्स एंड अदर्स लाइक दैट। और सबसे ज़्यादा जो मार्केट है, अगेन पैकेजिंग मटेरियल का मार्केट बहुत ज़्यादा है इंडिया में, तो उस पर आप अच्छी तरह काम कर सकते हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, पैकेजिंग मटेरियल में फूड आइटम्स, उनको हमें डे टू डे लाइफ में हर समय इस्तेमाल होते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा वाइड स्कोप है कि आप फूड आइटम्स के लिए पैकेजिंग। और इसमें एक चीज़ आजकल ये आ रही है कि जो हम अब आपको पता है सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स तो बंद हो गया है, तो उसके बदले में हम बहुत अच्छा स्कोप है, आप किस तरीके से कुछ ऐसी चीज़ बना सकते हैं जिसमें कि नेचुरल फाइबर्स का इस्तेमाल किया जा सके, या ऐसे आइटम्स का इस्तेमाल किया जा सके जिससे कि नेचर में ज़्यादा जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, हैजार्डस ना हो एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। तो अगर आप इस तरीके के कोई प्रोजेक्ट्स डालते हैं तो गवर्नमेंट से आपको डेफिनेटली उसके लिए एड मिलने की संभावना है। तो इसका बड़ा अच्छा स्कोप है। इट इज़ फॉलोड बाय इंडोटेक, होम टेक, मोबाइल टेक, क्लोथ टेक एंड सो ऑन। एक स्वॉट एनालिसिस मुझे मिला, ये सारा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की साइट पर भी था, अलग अलग जगहों से इसका मैंने रेफरेंस लिया हुआ है। तो आप इसमें देख सकते हैं जो हमारा इंडियन टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल्स का जो मार्केट है, उसमें हमारा स्वॉट क्या कहता है। तो अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो ये आप सबको पता है कि हमारे यहाँ यंग और चीप मैन पावर इजीली अवेलेबल है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। सेकंड इज स्ट्रॉन्ग टेक्सटाइल वैल्यू चेन। टेक्सटाइल हमारे यहाँ हर जगह में, हर प्रांत में बनती भी है और इस्तेमाल भी होती है, और एक जगह से दूसरी जगह जाती भी है, तो इसकी चेन बिल्कुल हमारी स्टैब्लिश्ड है। देन एक्टिव प्रमोशन फ्रॉम गवर्नमेंट, जो अभी मैंने आपको बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से ये जो आपका HRD मिनिस्ट्री है, उन सब में जो क्या होता है, माइक्रो एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अगर आप खोलेंगे तो पता नहीं कितनी एवेन्यूज़ हैं। देन अवेलेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की अवेलेबिलिटी है वो भी हमारे यहाँ पॉसिबल है। तो ये हमारी स्ट्रेंथ, हमारे देश की, भारत की। जो वीकनेसेस हैं हमारी, अगर हम कुछ स्टार्ट करते टेक्निकल टेक्सटाइल्स के फील्ड में, वो ये है इम्पोर्ट डिपेंडेंस फॉर मशीनरी। मशीनरीज हमारे यहाँ अभी भी थोड़ा कम बनती हैं एज कम्पेयर टू जो डेवलप कंट्रीज हैं। देन लो अवेयरनेस, लोगों को, एंड यूज़र को, जैसे कि अभी मैं आप लोगों से भी बात कर रही हूँ, हम लोगों को ज़्यादातर को पता ही नहीं है कि इससे ये बनाया जा सकता है, या हमारा अगर सिंगल यूज़ प्लास्टिक है तो उसको हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, तो उसके कितनी पोटेंशियल मार्केट है, ये अगर हमें पता हो तो भी वो एक हमारे लिए स्ट्रेंथ का काम करेगा। अगर अवेयरनेस जनरेट हो जाएगी तो वो भी स्ट्रेंथ का काम करेगा। शायद इसीलिए मैंने ये टॉपिक लेने की सोची थी। देन लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड रिलेटेड रेगुलेशन। क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, हमारे यहाँ PhD के स्टूडेंट, जैसा मैंने आपसे कहा, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो अपना
प्रोडक्ट बनाते, वो प्रोडक्ट आपका किस स्टैंडर्ड का बना है, मतलब जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं उनके साथ कंपेरेबल है या नहीं है। तो कंपैरिजन के लिए स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश्ड हमारे को अवेलेबल होने चाहिए। अगर वो अवेलेबिलिटी नहीं है तो मैं तो ये कहूँगी कि मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो आप यूज़ करेंगे तो पता चला उसकी तो ठीक से परफॉर्मेंस नहीं है। तो इसके लिए हमें उसको जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जो BIS स्टैंडर्ड्स हैं, जो ISO स्टैंडर्ड्स हैं, जो ATCC के स्टैंडर्ड्स हैं, उन सब के साथ कंपेरेबल होना चाहिए। और टेक्निकल टेक्सटाइल्स के वो स्टैंडर्ड्स अगर हमारे यहाँ लैब्स में अवेलेबल हों तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम उसको इम्प्रूव करते रहेंगे जब तक हम वो स्टैंडर्ड को अचीव ना कर लें। नेक्स्ट इज लिटिल और नो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेशलिटी फाइबर्स। हमारे यहाँ स्पेशलिटी फाइबर्स की जो मार्केट है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो बहुत ज़्यादा कम है। थोड़ा बहुत अब ये आदित्य बिरला ग्रुप वगैरह ने MP में स्टार्ट किया है, कहीं कहीं पर थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी भी इसकी बहुत बड़ी मार्केट की ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है हमारे देश के लिए, वो हैं ग्रोइंग इकोनॉमी, फ्यूलिंग डिमांड फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल्स। क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो अच्छी चल रही है। अब आजकल आप लोग सुन रहे होंगे रिसेशन के चांसेस हैं, लेकिन स्टिल देन हमारे देश का अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन है। तो जो इकोनॉमिक डिमांड है टेक्निकल टेक्सटाइल्स की, वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा, पहले से हम जब चोट लगती थी तो पट्टी बांध लिया करते थे, अब उसके लिए हमारे पास डिस्पोजेबल वो आ गए बैंडेज वगैरह, और पहले डिस्पोजेबल आ गई थी 20-30 साल पहले ही, लेकिन अभी की डेट में जो आई है ना, उसके अंदर वो मेडिकेटेड आई है कि आपको किस तरीके, वो भी स्पेसिफिक आई है, किस वाले एरिया में कौन सी लगनी है, वो सब आई है। जब डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं अगर आप मेडिकल के फील्ड में जाएं तो इमेंस एडवांसमेंट इज देयर। देन रिलेटिवली अनटैप्ड डोमेस्टिक मार्केट। हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है वो क्योंकि लोगों को पता नहीं है, तो अभी तक उसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बिल्कुल रॉ हैं। कोई अगर उसमें थोड़ा बहुत भी अपना स्टार्ट करते हैं, काम करते हैं, तो बहुत अच्छा पोटेंशियल है। नेक्स्ट कि जो डोमेस्टिक टेक्निकल टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादातर डोमेस्टिक मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है। तो अगर एक एक करके एक छोटी छोटी चीज़ भी अगर अवेलेबल होने लगे तो अपॉर्चुनिटी है, वाइड स्कोप है कि आपका एंटरप्रेन्योरशिप अगर आप स्टार्ट करते हैं, कोई एंटरप्राइज स्टार्ट करते हैं, तो उसके अच्छे चांसेस हैं। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द थ्रेट्स, अनकॉम्पिटिटिवनेस एट ग्लोबल लेवल। ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि जो ग्लोबल लेवल पर है वो अभी जो मार्केट है हम उसमें कहीं भी नहीं ठहरते हैं। अभी हम उसमें बहुत लिमिटेड, बस ज़्यादा से ज़्यादा पैकटेक में या इंडोटेक 1-2 क्षेत्र में आ गए हैं, बाकी में अभी हम उसमें कम्पीट नहीं कर रहे हैं। देन ईज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ हाईली टेक्निकल इंटेंसिव टेक्निकल टेक्सटाइल, टेक्नोलॉजी इंटेंसिव टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स थ्रू इम्पोर्ट्स। तो क्योंकि वो इजीली अवेलेबल होता है। जब चाइना से अगर हमें कोई चीज़ 500 रुपये की मिलती है और हम अपने देश में बना रहे 700 रुपये की, तो हमें पता है लोग वो 500 रुपये की ही खरीदना पसंद करेंगे। तो ये भी एक थ्रेट है, जब दूसरे देश से वही चीज़ कम पैसों में इम्पोर्ट होती है, तो दिस इज अ थ्रेट, डायरेक्ट थ्रेट टू द एंटरप्राइज। इसके बाद हम ये कह सकते हैं, जब हम अपने देश की बात करते हैं, तो क्योंकि हमें पता है कि हमारे देश में लार्ज पूल ऑफ स्किल्ड और साइंटिफिक या टेक्निकल मैन पावर की अवेलेबिलिटी है, जिससे कि हमारा इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है बहुत बढ़िया करके शेप किया जा सकता है। हमारे यहाँ पर अवेलेबिलिटी है, इसलिए हमारे यहाँ मैन पावर, अगर हम एक बार उसको स्किल दे दें, बल्कि जो ये है नेट्रा है, नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, जो कि गाजियाबाद में है सिचुएटेड, यहाँ पर हर समय कोई ना कोई ट्रेनिंग चलती रहती है, 1 महीने की, 2 महीने की, 6 महीने की, हर फील्ड में टेक्सटाइल से रिलेटेड ट्रेनिंग्स चलती रहती हैं। और अगर वो 2-3 ट्रेनिंग्स भी आप कर लेते हैं तो अपना कोई एंटरप्राइज छोटा मोटा स्टार्ट कर सकते हैं, और सीख करके फिर आप उसमें बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो एक ये मैन पावर हमारा इजीली अवेलेबल है। अगर आपको काम करने के लिए भी चाहिए तो भी आपको थोड़ा बहुत पढ़े लिखे लोग कम पैसे में मिल जाएंगे, जो कि बाहर दूसरी कंट्रीज में, बड़ी कंट्रीज में कभी भी नहीं मिलते। देन डेवलपमेंट ऑफ न्यू फाइबर्स एंड टेक्नोलॉजीज
जिससे कि एप्लीकेशन जिनका कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स में होना है, तो वो भी हमारे यहाँ पर मार्केट साइज और अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है अपने देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। तो इसलिए अगर ये कोई टेक्नोलॉजीज कोई डेवलप करते हैं, ये करते हैं, तो आपको ये पता है ना, जितने भी जो वर्ल्ड के लीडर्स हैं वो हमारे मोदी जी को इतना क्या पूछते हैं, कुछ तो उनकी अपनी भी स्पेशलिटीज हैं। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये भी है कि हमारा यहाँ मार्केट इतना बड़ा है अपने इंडिया का, 1.35 है ना। तो आप ये देख सकते हैं जब इतने सारे लोग हैं, तो सॉरी 135, तो इतने सारे लोग हैं, तो आप ये देखते हैं कि मार्केट इज ऑलवेज ओपन और वो दूसरे लोगों को ल्योर करता है अपनी साइड। तो व्हाई नॉट इंडियंस, हम अपने देश में अपने एंटरप्राइज क्यों ना स्टार्ट करें। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है, ये इसका जो थर्स्ट है वो प्रोडक्ट और लोकल कंजम्पशन, दोनों ही चीज़ें हमारे यहाँ हैं। अगर कोई भी प्रोड्यूस होता है तो वो लोकल मार्केट भी बहुत ज़्यादा है और इंटरनेशनल तो है ही है। तो इसकी वजह से जो हमारे इंडियन बायर्स हैं या जो सेलर्स है टेक्निकल टेक्सटाइल्स का, उसका इसको बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं जो हमारा टेक्निकल टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स हैं वो किस किस फॉर्म में मिलते हैं। ये है फाइबर, यार्न, फिल्म, मतलब कहीं तो जैसे हम कंपोजिट्स बनाते हैं, कंपोजिट का मतलब होता है कि 3 लेयर्स का मटेरियल बनता है, उसमें एक आपका कोर होता है और एक ऊपर और एक नीचे से उसको फ्यूज कर दिया जाता है ताकि वो फिर खुले नहीं। तो जैसे हमारा ये टेबल टॉप्स वगैरह है, जो इसको क्या कहते हैं, ये हाँ, सो ये जो टेबल टॉप्स वगैरह है सारे कंपोजिट्स के बनते हैं। तो इसके अंदर आप अगर खोल करके देखेंगे, जो ये लकड़ी कौन सी है, प्लाईवुड जो होती है, इसके अंदर अगर आप कभी खुल जाए देखेंगे अंदर फाइबर्स भरे हुए होते हैं। तो वो जो फाइबर्स हैं, वो जो टेक्निक है, दैट इज फॉर मेकिंग ऑफ कंपोजिट्स, दैट इज यूज्ड। तो इस तरीके से ये फाइबर या फिल्म वगैरह यूज होता है, या निटेड गारमेंट्स यूज होते हैं। निटेड का क्या, निटेड का मतलब हैंड निटेड नहीं है, जो आप लोग टी शर्ट्स वगैरह पहनते हैं जनरली, जितने भी वो जो होते हैं वो निटेड आर्टिकल्स होते हैं, और उसकी स्पेशलिटी होती है वो मजबूत होते हैं। उसके अलावा उसकी इलास्टिसिटी या इलांगेशन पावर बहुत बढ़िया होती है, वो काफ़ी ज़्यादा खिंच जाते हैं। इसके अलावा ब्रेडेड, जैसे हमारा शूलेस होता है, वो ब्रेडिंग टेक्निक से बनाया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ब्रेडिंग टेक्निक से बनाई जाती हैं। देन वोवन आर्टिकल्स, वोवन तो हमें पता है कि जितने खड्डी पर जो भी हैंडलूम में, पावर लूम में, और दूसरे जितने भी आजकल के जो एडवांस लूम्स हैं, उनमें वोवन आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। और अगर हम फैब्रिक कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो उसमें वोवन और निटेड, 2 तरीके के आर्टिकल्स सबसे ज़्यादा जो कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा नॉन वोवन, जो अभी आपने इसमें कोरोना में देखा, जितने भी आपने ये पीपीई किट्स वगैरह देखे थे या मास्क वगैरह, वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉन वोवन्स के बनाए जाते हैं, क्योंकि ये ईजी टेक्निक है, ईजीली अवेलेबल है, और बहुत ज़्यादा खर्च में इसकी फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं पड़ती। और या आप नॉन वोवन्स प्रोक्योर कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप उसके आइटम्स बना सकते हैं। इसकी बहुत 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 बड़ी मार्केट अब बन गई है। इसके बाद है कंपोजिट्स, जो मैंने आपको बताया कि 3 लेयर्स में बनाया जाता है। 3 to more than 3 layers में ऑल्सो भी देयर एज पर एंड यूज। अब हम देखते हैं जो इसमें मटेरियल्स यूज होते हैं, जैसे कि पॉलिएस्टर, पॉलीप्रोपाइलीन, नायलॉन, ग्लास, मेटेलिक यार्न्स, नेचुरल फाइबर्स एंड मैनी मोर। यहाँ अगर आप कहेंगे कि हमें इन सब का पता नहीं है, तो नेचुरल फाइबर्स का कॉटन, सिल्क, वुल, ये सब आपको जरूर पता होगा। ये इसमें जूट, हेम्प, रेमी वगैरह आपको पता होगा। इसके अलावा जो अपने उत्तराखंड में होता है, मुरवा होता है या बिच्छू घास होती है, इस सब से भी बहुत बढ़िया फाइबर निकलता है, और उस फाइबर के आजकल आर्टिकल्स, गारमेंट्स भी बनाए जाते हैं। और उसके अलावा पैकेजिंग मटेरियल्स वगैरह में भी उसका बड़ा योग है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस जो आपकी लोकली अवेलेबल मटेरियल है, अगर उससे रिलेटेड आप कोई टेक्नोलॉजी लेकर के और पैकेजिंग मटेरियल या कुछ, क्योंकि आपको बाकी जितनी टेक्नोलॉजी वो सब अवेलेबल है, मटेरियल अवेलेबल है, आपका लोकली अवेलेबल है। तो अगर आप उसको बिच्छू घास जो कि वैसे ही उग रही है, उसको इस्तेमाल करके, उसकी प्रोसेसिंग करके आप उसके फाइबर को इस्तेमाल करते हैं, उसके अच्छे एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो आपका बहुत अच्छा ये चलेगा, अपना एंटरप्राइज चलेगा। तो इसलिए इसमें जो पोटेंशियल, जो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एवेन्यूज हैं।
जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ये तो थोड़ा टेक्सटाइल के फील्ड का ही है, नॉन वोवन, निटिंग, वीविंग, रेजिन कोटिंग और कंपोजिट्स। तो जो मैंने आपको बताया था कि 12 तरीके के टेक्निकल टेक्सटाइल्स होते हैं, तो यहाँ आप उनके नाम देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। इसमें अगर हम जाते हैं मोबाइल टेक में, एक एक करके हम अभी इन इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। तो मोबाइल टेक में अगर हम जाते हैं तो यह ग्रोइंग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में हम इससे में डील करते हैं। और इसमें क्या क्या काम किया जा सकता है? ग्रोइंग यूसेज ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक सीट बेल्ट्स, एयर बैग्स एंड ऑटोमोटिव कारपेट्स। जो पाँव के नीचे कारपेट्स पड़ते हैं वो भी आप देखते हैं, डे टू डे हम उनको चेंज भी करते हैं। और बहुत लग्जूरियस और ब्यूटीफुल जो इंटीरियर होता है वो कारों का आजकल आने लगा है। पहले हम लोगों की सिंपल छोटी सी कार हुआ करती थी, अब उसमें भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि अवेलेबिलिटी है टेक्नोलॉजी की, तो इसलिए अवेलेबिलिटी है टेक्नोलॉजी की, इसलिए एवेन्यू भी है। तो आप इसमें देखिए जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं वहीं आपके एवेन्यूज भी छिपे हुए हैं। इवॉल्विंग मोटर सेफ्टी रेगुलेशंस, और मोटर सेफ्टी मतलब जब आप कोई यात्रा कर रहे हैं कुछ, तो उसमें सेफ्टी जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उससे रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें जो कि आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, कोई इंटरप्राइज से रिलेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज स्पोर्ट टेक। स्पोर्ट टेक इज इंक्रीजिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स इन इंडिया। ये तो हमें पता ही है कि नेशनल इंटरनेशनल आज से 30-40 साल पहले भी हुआ करते थे, लेकिन अब जो उनका नंबर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और आज की डेट में अगर हम कहेंगे तो उनमें टेक्निकल टेक्सटाइल्स का इस्तेमाल बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा हो गया है। देन गवर्नमेंट स्कीम्स सच एज सब्सिडीज टू यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, जिससे कि जो स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव हो सके। आप लोग अपने कॉलेजेस में, अपने विश्वविद्यालय में देखते होंगे कि आप जो स्पोर्ट्स है उसके लिए आपको फंड्स भी मिलते हैं, और जो आर्टिकल्स आपके स्पोर्ट्स के आते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं या आप खरीदते हैं वो सारे के सारे हाईली टेक्निकल होते हैं, तो वो पर्टिकुलर डिमांड को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा भी अपना दिमाग लगाएं और ये सोचें कि ठीक है ये चीज़ ऐसे बनी है, हम इसको और कैसे कम रेट में बना सकते हैं। देखिए मार्केट हर चीज़ के लिए, जब आप बात करते हैं मार्केट की, मार्केट हर चीज़ के रहते हैं, और मार्केट के दो मेन प्रिंसिपल्स हैं, एक आपका अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल होना चाहिए, दूसरा आपका डिमांड होना चाहिए, और तीसरी बात है सप्लाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। देन जो खेलो इंडिया मिशन है उसके अनुसार स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स वेयर को गवर्नमेंट और ज़्यादा पॉपुलराइज कर रही है। तो आप इससे रिलेटेड कोई अगर आर्टिकल्स, कुछ आइटम्स, कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें बनाते हैं तो it will be having good market avenues. Coming is geotech. Geotech is significant investment जो कि गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्लान किया है। जियोटेक में आपका जो रोड्स हैं, आपका जो आपने देखा होगा इंडिया में कितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप हुआ है। रोड्स के बारे में अगर हम बात करें, या डैम्स के बारे में बात करें, या जितना ये कुछ चीज़ें ओवरलैपिंग भी हैं जब हम टेक्निकल टेक्सटाइल्स की बात करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसके लिए ओकोटेक, मतलब कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। तो इसमें जो गार्बेज, जो लैंडफिल्स होते हैं, जो आप जब दिल्ली गाजीपुर वाले एरिया में जाते हो तो आप देखते होगे कि छोटी छोटी पहाड़ियाँ सी बन गई हैं जंगल की, और उसको पूरा का पूरा जो सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट के थ्रू उसको पूरे को सड़ा करके पूरा अब वहाँ पर वो अपना डेवलप कर रहे हैं कारपेटिंग और वो सारा का सारा। तो उससे लॉन एरिया, तो दोज एरियाज में बी यूज्ड एज फॉर पब्लिक एंटरटेनमेंट, उसके तरीके से उसको पार्क्स की तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो जियोटेक का इसमें बहुत बड़ा रोल है। फिर इसमें जो यूसेज है उसके बेनिफिट्स लोगों को पता होने चाहिए। गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स, इसके बारे में जो है अगर वो पता है, उसके अकॉर्डिंग अगर उसको फुलफिल करते हुए कोई वर्क आप स्टार्ट करते हो, दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल। एक्टिव प्रमोशन, जिससे कि गवर्नमेंट ये कह रही है बार बार कि अगर आप जियोटेक को यूज़ करेंगे तो आपका गवर्नमेंट उसको प्रमोट करेगी। तो इसके लिए बहुत सारे फील्ड्स हैं जहाँ की आगे जाया जा सकता है। अभी अगर आप एग्जाम्पल लें अपने यहाँ पर, तो नैनीताल से आते समय लैंडस्लाइड्स आप रोज़ देखते हैं। पहले उसमें पत्थरों को रख के क्या अब उसको कवर किया जा सकता है। मैं आपको फोटोज़ में दिखाऊंगी अभी।
कवर किया जा सकता है, या फिर आप टेरी डैम की बात करें तो इट इज समथिंग वेरी हाईली टेक्निकल, इतने ऊपर के एरिया में जाकर के इतना बड़ा डैम बनाना। तो अपने इंडिया के पास भी सारी की सारी टेक्निक्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट इज बिल्टेक। बिल्टेक इज डिमांड जो है हाई स्पेंडिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर। रियल इस्टेट जितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है उतना ज़्यादा बिल्टेक की डिमांड बढ़ती जा रही है। देन इंक्रीजिंग अवेयरनेस, जो प्रोडक्ट्स हैं आर्किटेक्चरल मेम्ब्रेन, स्कैफोल्डिंग, नेट्स, ये आप देखेंगे तो सारे के सारे इसमें इस्तेमाल होते हैं और बहुत आसानी से इवन नेचुरल फाइबर्स को इस्तेमाल करके भी बनते हैं। तो डिपेंड करता है, कोई ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपकी जो बहुत कॉस्टली है वही अच्छी होगी। मैंने आपसे कहा था स्टैंडर्ड्स की बात, अगर आप उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करें और कुछ चीज़ें जो बहुत कॉस्टली हैं उसके कंपैरिजन में आप 4-5 तरीके की चीज़ें बनाने के लिए मार्केट में आप अगर अवेलेबल कराते हैं तो जिसको जो ज़रूरत होगी वो मार्केट अवेलेबल है, सब लोग उसके हिसाब से चीज़ों को लेना पसंद करेंगे। देन मेडिटेक, मेडिकल टेक्सटाइल्स, ये तो आपको पता है हेल्थ केयर इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और बहुत ज़्यादा ग्रोइंग इसमें चांसेस हैं। पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मेडिकल की भी ज़रूरत बढ़ती जा रही है और इसके बारे में भी लोगों में क्या है, अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस दोनों ही बढ़ रही है। आज से पहले हम जब कभी चोट लगती थी हाथ में घर में ही पट्टी कपड़े की उठा करके उसको धुलाई हुई देती थी, उसको बांध देते थे, लेकिन अब हमें पता है बैंडेड अवेलेबल है या गॉज बढ़िया वाली वो अवेलेबल है, या जैसे आप नाम लीजिए, पता नहीं कितने एग्जाम्पल्स हैं इसके। तो उस चीज़ की एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ती जा रही है। या बॉडी के अंदर के जो पार्ट्स हैं जैसे हार्ट के वॉल्स हैं या और भी किडनी का रिप्लेसमेंट है, ये बहुत सारी चीज़ों में मेडिकल टेक्सटाइल्स का इस्तेमाल होता है जिसमें कि कॉम्पिटेबिलिटी होती है बॉडी के अंदर इस्तेमाल होने की, जिससे कि जो एंजाइम्स हैं या बाकी जितने केमिकल्स हैं उनके साथ वो कॉम्पिटेबल होते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। देन प्रोटेक्ट मतलब प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल्स, ये डिफेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितने भी अपने डिफेंस सर्विसेज हैं तीनों में प्रोटेक्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो कि मैंने आपको अभी एग्जांपल भी दिया था शुरुआत में। जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं पहले हम सारा का सारा बाहर से ही लाते थे, अब एरामिड वगैरह यहाँ पर भी बनने लगा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर अवेलेबिलिटी भी हो गई है और जो कॉस्ट है वो भी थोड़ी कम हो गई है। लोगों को पता चल गया है कि फायर रिटार्डेंट क्लोथिंग कौन सी होती है, केमिकल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग कौन सी होती है, तो उसका भी इस्तेमाल यहाँ पर बढ़ गया है। केमिकल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग जैसे अभी आप सुन रहे होंगे सीरिया वगैरह में भी, और इसके अलावा केमिकल के बारे में यूक्रेन के बारे में भी बात की जा रही थी कि कुछ केमिकल्स मे बी यूज देयर लाइक दैट। तो जब हम बात करते हैं आजकल न्यूज़ सुनते हैं तो हमको पता चलता है कि कितनी तरीके की टेक्निकल टेक्सटाइल्स की जो इम्पोर्टेंस है, स्कोप है, वो बढ़ गया है। सिर्फ ज़रूरत है हमें इसको पूरा खोल के देखने की, इसके अंदर क्या क्या मटेरियल्स यूज़ होते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। अगर ये चीज़ें हमें पता होंगी तो हम अपने आप से अपना दिमाग इस्तेमाल करके और गवर्नमेंट की क्या क्या इसके अंदर पॉलिसीज़ हैं या क्या क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज होम टेक। होम टेक के बारे में जो घर के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, अब हम अपने घर के अंदर या पब्लिक प्लेसेस में जैसे कि पिक्चर हॉल्स हो गए या बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, इस तरीके से वहाँ पर और या ये हॉल्स वगैरह हो गए हैं, तो वहाँ पर हम फायर रेजिस्टेंट या फायर रिटार्डेंट टेक्सटाइल मटेरियल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो होते हैं तो जो बड़े नंबर पर जो लोगों की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो उसको कम किया जा सकता है या घटाया जा सकता है। फिर रेगुलेशंस इन यूसेज ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स पब्लिक प्लेसेस में अब ये भी हो गया है कि आपका जो टेक्निकल टेक्सटाइल जैसे कि पिक्चर हाउस में गवर्नमेंट ने ये कर दिया है, या बड़े बड़े जो बैंकेट हॉल्स वगैरह हैं उनमें जो पर्दे वगैरह लगते हैं वो सारे फायर रिटार्डेंट होने चाहिए, मतलब वो फायर को कैच ना करें। ये गवर्नमेंट की ओर से ऑर्डर है, तो रेगुलेशन है, तो वन हैज़ टू फॉलो दैट। तो वो किस तरीके से आप उसको कम पैसे में और अट्रैक्टिव बना सकते हैं बाय यूजिंग अदर थिंग्स, तो दैट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द एंटरप्राइज। इवॉल्विंग कस्टमर अवेयरनेस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इट. Then technical textiles in terms of cloth tech is also there. Then Indutech,
इंडोटेक में भी मैन्युफैक्चरिंग टेक्स जो सेक्टर है इंडिया में वो इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स के लिए इवॉल्व हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। पैक टेक का तो मैंने आप लोग को बार बार बताया, हम डे टू डे में बहुत ज़्यादा पैकेजिंग मटेरियल इस्तेमाल करने लगे हैं, बल्कि मेरी अपना ओपिनियन ये है कि अगर पैकेजिंग मटेरियल के बदले में हम रीयूज़ होने वाली चीज़ों को इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आजकल इनकी लोअर प्राइस, लेकिन आपने देखा होगा बैम्बू के भी काफ़ी ज़्यादा प्लेट स्पून्स वगैरह आने लगे हैं जो कि डिस्पोजेबल ग्लासेस वगैरह की तरीके से यूज़ होते हैं, और डिस्पोजेबल आइटम जो थर्मोकोल है या प्लास्टिक्स वगैरह है उन सबको रिप्लेस करने लगा है। तो आप भी इस दिशा में भी सोच सकते हैं। यहाँ पर भी एक अच्छा इंटरप्राइज का बहुत अच्छा एवेन्यू है, क्योंकि मार्केट तो आपकी अपनी लोकल मार्केट है, स्टेट में है, नेशन वाइज है या इंटरनेशनल भी है। देन एग्रोटेक के बारे में बात करेंगे तो गवर्नमेंट से बहुत एक्टिव सपोर्ट है इसमें। आपको पता चला था कि जो मुंबई है वहाँ पर एग्रोटेक का स्पेशल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया है, और इसमें कृषि विज्ञान केंद्र जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े होते हैं, जितनी भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं या सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें कि पंतनगर भी एक है, हमारे यहाँ 11 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, और उन सब में भी एग्रोटेक से रिलेटेड मटेरियल का भी इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें सारे में रिसर्चेज होती हैं और फार्मर्स को नॉलेज भी दी जाती है। तो वहाँ पर इन सब का एग्रोटेक का बहुत अच्छा रोल है। नेक्स्ट इज ओकोटेक के बारे में जब हम बात करते हैं तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, और इसमें इरोजन प्रिवेंशन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहाड़ ढल जाते हैं, या नैनीताल में आप ग्रैंड होटल के नीचे वाला एरिया देखेंगे तो वहाँ पर भी ज़मीन धंस जाती है। तो इस तरीके का जो टेक्निकल मटीरियल है दैट कैन बी यूज देयर। वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन जो झील में यूज़ किया था, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स वो भी आपने देखा था कि यूज़ किया था वहाँ पर, लैंडफिल्स एटसेट्रा। तो ओकोटेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमारे अपने स्टेट में है। देन होमटेक का ये है कि जो फायर रेजिस्टेंट रिटार्डेंट, जैसे किचन वगैरह में हम काम करते हैं लेडीज़, तो एप्रन या इस तरीके के पहने जो कि फायर रिटार्डेंट हो, ताकि कोई भी ट्रेजेडी से बचा जा सके। और तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो जो ये नीड है वो टेक्निकल टेक्सटाइल्स की इंडिया में वो बहुत 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 बड़े एवेन्यूज़ हैं। वो अनस्टॉपेबल एंटरप्राइज है इस एरिया में। तो जो अगर कोई अपना सेगमेंट इसमें बनाना चाहते हैं तो वो अपने स्ट्रेंथ, जो मैंने शॉर्ट एनालिसिस बताया था, उसके हिसाब से देख सकते हैं, वो फोकस कर सकते हैं कि वो किस फील्ड में जाएं। उसके बारे में मेडिकल टेक्सटाइल्स, हाइजीन, ऑटोमोटिव टेक्सटाइल्स एटसेट्रा में आगे जा सकते हैं, या एथलीट या फिटनेस इंडस्ट्री में, स्पोर्ट टेक्सटाइल्स में जा सकते हैं, और बाकी भी मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स के लिए भी आगे काम कर सकते हैं। और इसके अलावा जो एग्रीकल्चर है, हमारी बैकबोन है इकोनॉमी की आज की डेट में भी, तो एग्रो टेक्सटाइल्स की में आगे जा सकते हैं, इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स में जा सकते हैं। और ये आपको पता है अभी बहुत अच्छा जो रोड और रेलवेज का जो हमारा नेटवर्किंग है वो बिल्कुल इतनी मेटिकुलसली प्लान्ड है और इतनी मेटिकुलसली बनी हुई है कि अब इंडिया में जो एक जगह से दूसरी जगह की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बन गई है। इसलिए अब अगर हम कहीं पर भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके जो प्रोडक्ट को है वो दूसरी स्टेट में, कहीं दूर की स्टेट में भेजने में कोई परेशानी नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जिससे कि हम अपने एंटरप्राइज को आगे बूस्ट कर सकते हैं। और सीवेज वगैरह बाकी सब, मतलब चीपर कॉस्ट में अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं, किसी चीज़ का रिप्लेसमेंट यूज़ करते हैं, फूड बास्केट बनाते हैं, नॉन वोवन का बनाते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे फील्ड्स हैं। इसी तरीके से जैसे किसी होटल वगैरह में आप देखेंगे बहुत हैवी थिक कर्टेन्स होते हैं, बहुत कॉस्टली कर्टेन्स होते हैं। अच्छे होटल्स वगैरह आप जाएंगे और 2-3 लेयर्स होती है कर्टेन्स की भी, तो
उनको वॉशिंग के लिए करना, ये भी इको फ्रेंडली नहीं है। तो अगर हम इनको टेम्परेरी इस तरीके के कोई डिज़ाइनदार कुछ इस तरीके की चीज़ों से रिप्लेस कर सकें, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंटरप्राइज दैट कैन बी स्टार्टेड। इसी तरीके से आजकल हम देखते हैं जो वॉलपेपर्स आते हैं, वॉलपेपर्स भी बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, कई सारे तरह के टेक्सचर्स आते हैं। तो वॉल पर में इतने सारे डिजाइन्स नहीं बना सकते, तो वॉलपेपर इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंटरप्राइज विच कैन बी यूज। आपने देखा हो बहुत बड़ी मार्केट हो गई है इसकी भी, जिसमें चाइना लीड कर रहा है, व्हाई नॉट इंडिया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत सारे सेगमेंट्स हैं और उन सब में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है जो कि हमें ग्रैब करने की ज़रूरत है। तो जब हम बात करते हैं मोबाइल टेक के लिए, तो इसमें भी आप करते हो सीट बेल्ट्स वगैरह ये सब। तो इन सब को देखते हुए अगर हम किसी भी टेक्निकल टेक्सटाइल्स के फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो दैट विल बी वेरी वेरी lucrative, market is there. So बाकी सब मैंने इन्हीं टेक्सटाइल्स के बारे में और डिटेल किया हुआ है। डॉक्टर छवि, हेलो। यस मैम। छवि, टाइम कितना हो गया या और एक्सप्लेन करने की जरूरत है? यस मैम, 15 more minutes. Okay. So I would, this was an overview. I have just taken some more details regarding this. So like the agrotech के अंदर अब आप कहेंगे क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो वो भी मैंने इसमें थोड़ा सा इंक्लूड किया हुआ था। इसमें आता है आपका एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग सेगमेंट्स। और जब मैं ये बात आपको बता रही तो ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से भी रिलेट कर रहा है। आप ये देखिए, हर मिनिस्ट्री के अपने कुछ पॉलिसीज होती हैं, अपने कुछ पॉइंट्स होते हैं जिस पर कि वो अपने थर्स्ट एरियाज होते हैं जिस पर कि वो काम करते हैं। तो एग्रोटेक से भी, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से भी आपको इसके लिए फंडिंग हो सकती है। और इसमें वोवन, नॉन वोवन, निटेड फैब्रिक सब तरीके के इस्तेमाल किए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इसमें, ये सफिशिएंट सॉइल ह्यूमिडिटी और सॉइल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए काम में आता है। इससे इम्प्रूव किया जा सकता है प्रोडक्टिविटी और रिड्यूस किया जा सकता है जो आप केमिकल्स को इस्तेमाल करते हैं। केमिकल्स का यूज़ आप जहाँ पर कम कर रहे हैं तो यू हैव बिकम अ वेरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, क्योंकि आप केमिकल्स का यूज़ करके इको फ्रेंडली बना रहे हैं उसको। तो ये एग्रीकल्चर के बारे में जब हम देखते हैं तो क्रॉप प्रोडक्शन में आपको किस किस चीज़ के लिए चाहिए होता है बेटर या प्रोटेक्शन अगेंस्ट सन, विंड, रेन्स, फ्रॉस्ट, बहुत ठंड से, बर्ड्स के से, इंसेक्ट्स से, और आजकल तो मुझे कहना चाहिए मंकीज से भी होना चाहिए। तो आर्टिफिशियल मल्च एंड इंसुलेटिंग ग्राउंड कवर्स, ये आजकल जो नेचुरल फाइबर्स हैं उनसे भी बनने लगे हैं। तो अगर आप नेचुरल फाइबर से लेकर के उसको अपने स्टेट में उसको यूज़ करें तो दैट विल बी वन ऑफ द वेरी गुड एंटरप्राइज दैट कैन बी एस्टैब्लिश्ड। फिर फॉरेस्ट्री के एरिया में अगर हम देखते हैं तो इसमें इरोजन और एफॉरेस्टेशन को दूर करने के लिए, एफॉरेस्टेशन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देन हॉर्टिकल्चर के लिए अगर आप करते हैं तो यहाँ पर ग्रीन हाउस कवर, एंटी बर्ड्स नेस्ट, नेट्स, कवर फ्रॉम हेल स्टॉर्म, ये सब प्रोडक्ट्स हैं जो कि इसके कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको ये देखना है आप इनमें से किस चीज़ के अंदर आपकी जो एक्सपर्टीज़ है वो डेवलप हो सकती है, या आप इन चीज़ों के अंदर किस चीज़ में काम कर सकते हैं। एनिमल एंड पोल्ट्री रेयरिंग, ये एक बहुत अच्छा वो है। ज़्यादातर लोग एनिमल और पोल्ट्री रेयरिंग अपने बैकयार्ड्स में भी करते ही हैं। तो इसमें आइडेंटिफिकेशन बेल्ट, अडर्स नेट्स, मिल्क फिल्टर्स इन ऑटोमेटिव मिल्किंग और इस तरीके की चीज़ें, अंडरले पाथ एटसेट्रा कैन बी established, made, manufactured. Fishing and fish farming, इसमें fish lines, nets, ropes, twines are always required. एग्रोटेक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है, सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन के लिए फ़ायदा है, सॉइल को ड्राइंग होने से बचाता है, ड्राई होने से बचाता है, रिक्वायरमेंट
ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और पानी। तो ये वाला जो थर्ड पॉइंट है, अगर आप इसको एनवायरनमेंट की दृष्टि से देखिए तो नथिंग लाइक इट। तो इन सब को देखते हुए आप इसको एनवायरनमेंट उसमें भी अपना दे सकते हैं, वर्क दे सकते हैं। मेक प्रोडक्ट क्वालिटी बेटर, और क्रॉप और नॉन सीजनल प्लांट्स के लिए जैसे आपने जो पॉली हाउसेस वगैरह होते हैं वहाँ पर जितना भी हो टेक्सटाइल मटेरियल का ही इस्तेमाल किया जाता है। और क्लीनलीनेस ऑफ क्रॉप, क्योंकि जब वो कवर्ड होगी या उसकी जब ज़मीन ढकी हुई होगी तो वीड्स वगैरह नहीं होंगे। और हार्वेस्टिंग भी इजी करता है। It benefits like optimum plant growth, fertilizers and herbicides may be saved. It also saves time, क्योंकि लेबर इतनी ज़्यादा नहीं लगने की ज़रूरत होती है। और पीस ऑफ माइंड, क्योंकि जब आपका ये जो मटेरियल आप यूज़ करें इट इज़ रिलायबल, सेफ, वर्सटाइल एंड इफेक्टिव। एग्रोटेक के रूट प्रूनिंग मेम्ब्रेन इसकी यूज़ होती है, और इसका फ़ायदा ये है इंस्टॉल करने में इजी है और रीयूज़ होती है मल्टीपल टाइम्स। तो ये रूट प्रूनिंग मेम्ब्रेन की एक फ़ोटो दी हुई है यहाँ पर। ये किस तरीके से इस्तेमाल होती है आप ये देख रहे हैं। दो ये प्लांट्स हैं, तो इनकी जो रूट है ये नीचे से खुल करके पूरे में ज़मीन में चली गई है, ठीक है। ये इसके बदले में, कंटेनर के बदले में पूरी नीचे ज़मीन में सॉइल में चली गई है। तो इससे क्या होगा, विदाउट प्रोपोगेशन रूट्स इमर्ज फ्रॉम द ग्रोथ कंटेनर। ये इसके यहाँ से प्रोपोगेशन यहाँ निकल गई है। लेकिन यहाँ पर जब आपने प्रोपोगेशन के लिए ये मेम्ब्रेन लगाई है तो क्या होगा, रूट्स विल बी कंटेन्ड विद इन द कंटेनर। और इससे फ़ायदा आपका ये है, स्ट्रक्चरल रूट डेवलप विद इन द कंटेनर एंड रूट सिस्टम डजंट स्प्रेड अक्रॉस द प्लांटिंग बेड। तो जो आपका सॉइल है, सॉइल की फर्टिलिटी है वो आपकी मेंटेन हो सकती है। आप उसमें जो भी ये डाल रहे हो, कुछ कंपोस्टिंग वगैरह जो भी कुछ उसके में आप डाल रहे हैं दैट विल बी यूज 100%। इसी तरीके से ट्री प्रोडक्शन बैग्स हैं, यहाँ आप देख रहे हैं इनकी जो रूट्स हैं वो बाहर जा रही, पूरे में फैल रही है। यहाँ पर ये सिर्फ इतने एरिया में हो रही, तो उससे क्या है कि इजी हार्वेस्टिंग है, और जो रूट्स है वो भी परफेक्टली विल बी हैविंग न्यूट्रिशन। वीड कंट्रोल के लिए भी एग्रोटेक मटेरियल का यूज़ किया जाता है, और आपको पता है वीडिंग के लिए कितनी ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे कि जो स्प्राउटिंग वीड है वो डॉर्मेंट स्टेट में चली जाती है और आगे नहीं बढ़ती है। तो जो क्या कहते हैं उसे, खुद जुताई कहते हैं, उसकी ज़्यादा मतलब वीड कंट्रोल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसमें अच्छी बात यह है वाटर एंड एयर परमेबल है, तो ये ज़्यादातर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बनी होती है लेकिन ड्यूरेबल है, तो इस वजह से ये रीयूज हो सकती है मल्टीपल टाइम्स। तो हम कहेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो इसका मतलब इको फ्रेंडली नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया क्योंकि 4 पॉइंट्स हैं उसके, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। तो जब हम उसको मल्टीपल टाइम्स रीयूज करते हैं तो दैट कम्स अंडर इको फ्रेंडली मटीरियल। फिर वीड कंट्रोल के लिए यहाँ पर देखिए, इस फील्ड में वीड कंट्रोल के लिए इसको बिछाया हुआ है इस एरिया में, ताकि कोई रिस्क ना रहे। तो ये मोर देन 15 ईयर्स एक इन्होंने अपना आइडिया दिया हुआ है जो स्टैंडर्ड से कंपेयर किया होगा। तो और रेजिस्टेंट है एल्कली और अल्ट्रावायलेट रेज से, तो ये मल्टीपल ईयर्स इट कैन बी यूज्ड। वीड कंट्रोल डिस्क, ये तो आपने देखा होगा आजकल बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होने लगी गमलों वगैरह में। यहाँ पर वो छोटी सी डिस्क डाल दी जाती है जिससे कि वीड पैदा नहीं होती उसमें, ठीक है। तो वो जो भी न्यूट्रिशन है वो पूरा का पूरा प्लांट को मिलता है, प्लांट की जो ग्रोथ है वो बेटर रहती है, और वीड उसमें आपको निकालने की फिर ज़रूरत भी नहीं पड़ती। दोनों चीज़ें, आपका जो न्यूट्रिशन है वो सेव होता है, सेकेंडली लेबर सेव होता है। देन कंपोस्टिंग टब, ये इसके अंदर जो है ह्यूमिडिटी को मेंटेन करता है, जितना चाहिए उतना, जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाता है। जो हम क्या बोलते हैं, सड़ा करके जो खाद बनाते हैं ना, उसके लिए ये कवर करने के काम आता है। तो बाहर से जो पानी होता है जैसे स्नो का वाटर है या रेन वाटर है, वो इसके ऊपर से पूरा फिसल जाता है छाते की तरीके से, और अंदर का जो जितनी ह्यूमिडिटी है वो मेंटेन रहती है। तो जो मटीरियल है, जो कूड़ा है, वो जल्दी सड़ता है, तो जल्दी फर्टिलाइजर बन सकता है। इसी तरीके से विंटर प्रोटेक्शन रेजिडेंशियल लॉन्स के लिए यूज़ किया जाता है।
और लेक पॉन्ड्स वगैरह स्ट्रीम्स में लाइनर्स की तरीके से यूज किया जाता है। इसमें पॉलिएस्टर को यूज करते हैं, ये सीधा जल्दी सिंक होता है और जिससे कि जो फ्लूइड और गैसेस होती हैं वो निकल जाती है पॉन्ड से, और जो वाटर होता है वो स्टैग्नेटेड वाटर भी होता है, वो सड़ता नहीं है। ये इससे क्या होता है, एक्वेटिक लाइफ वो आपकी अच्छी रहती है। केमिकली एंड बायोलॉजिकली इट इज रेजिस्टेंट, और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी होती है। गैसेस इसके अंदर से बाहर निकल जाती है, नहीं तो अगर गैस अंदर रहेंगी पानी के तो एक्सप्लोड हो सकता है, लेकिन गैसेस इसके थ्रू बाहर निकल जाती है। और इजी टू इंस्टॉल, क्योंकि इसे सिर्फ बिछाना होता है। इसी तरीके से ग्रोथ पैड्स और मैट्स इस्तेमाल होते हैं। जो ग्रोथ पैड्स हैं उनके कई सारे फायदे भी हैं। ग्राउंड कवर फैब्रिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और जो फैब्रिक मटेरियल्स है वो आप, ये जो फैब्रिक मटेरियल्स हैं ना, जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, पॉलीथाइलिन, पॉलीओलिफिन, पॉलीओलिफिन के अंदर पॉलीप्रोपाइलिन और पॉलीथाइलिन पॉलीओलिफिन के अंदर आता है, तो ये सब एग्रो टेक्सटाइल्स के अंदर यूज होता है और इसकी मार्केट डे बाय डे बढ़ती जा रही है। ये जो मटेरियल है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ये जितने भी फैब्रिक्स हैं ये विद इन रीच है। तो इनसे अगर आप कोई भी चीज़ अपना सोच करके उसको आगे बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अगला, होम टेक्सटाइल्स में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है, एडवांस फ्लेक्सिबल मटेरियल्स इन प्रोसेस टेक्नोलॉजीज, और इसमें क्लोथिंग और फर्निशिंग आइटम्स आते हैं। ये बहुत अच्छा बड़ा मटीरियल एरिया है। इसके एप्लीकेशंस है कर्टन्स टू मैट्रेस, वॉलपेपर्स टू शावर कर्टन्स, गार्डन अम्ब्रेला टू किचन एप्रन्स। तो नाउअडेज बीइंग यूज्ड एवरीवेयर, आप देख रहे हैं हर जगह पर कर्टन, मैट्रेस हमारे कितने ज़्यादा रीयूजेबल, वॉशेबल, सब कुछ अवेलेबल होने लगे हैं। पहले नहीं होते थे क्योंकि वो सब टेक्निकल टेक्सटाइल मटेरियल्स के बने हुए होते हैं। होम टेक है, इसका ये सिंबल है। और कारपेट बैकिंग, फिलिंग फॉर मैट्रेसेस, फर्नीचर एंड फिलिंग मटेरियल्स, और वाइप्स, मॉप्स, हेडर टाइप्स फॉर हैंगिंग कर्टन्स एटसेट्रा, दीज आर यूज्ड। और इसके अलावा फाइबर फिल्स, जो हम अंदर क्या क्या मटेरियल भरते हैं। पहले आप लोगों को पता है, हम लोग रजाई लिया करते थे जो कि जिसके अंदर कॉटन फाइबर्स होते थे, तो वॉशेबल नहीं होती थी, ड्राई क्लीन भी मुश्किल से ही हो पाती थी। आज की डेट में फाइबर फिल्स होते हैं, हम अपने घर की वॉशिंग मशीन में ही उसको वॉश कर लेते हैं, तो हाइजीन भी मेंटेन होती है और पैसे भी बचते हैं, और इजीली अवेलेबल है। लाइट इन वेट है, तो लाइट इन वेट है तो कंफर्ट भी इसमें ज़्यादा है। और इसी तरीके से जूट कारपेट बैकिंग से, स्टफ टॉयज है, ब्लाइंड्स है। होम टेक के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, फ्लोरिंग्स वगैरह के लिए भी हैं। फ्लोरिंग्स में इसका इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक थर्मल शॉक रेजिस्टेंट, केमिकल रेजिस्टेंट, एंटी माइक्रोबियल, फायर रेजिस्टेंट, एब्रेजन रेजिस्टेंट एटसेट्रा। ओको टेक्सटाइल, इको टेक्सटाइल्स, ये आपको मैंने बताया था। इसमें they tap into both post-consumer, post-industrial waste, streams and scraps. Everything can be covered under this. Reuse, and ये जो है इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है, जो सेव द रैपिडली डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, उन सबको सेव करने में काम आता है। ऑयल रिग्स वगैरह में भी यूज़ करते हैं इसे, बहुत सारी जगह, सॉइल सील्स के लिए, ड्रेनेज सिस्टम के लिए, मतलब आप नाम लीजिए और हर जगह टेक्सटाइल का इस्तेमाल है टेक्निकल टेक्सटाइल्स के थ्रू। और इसमें मैंने आपको जैसे बताया कि गवर्नमेंट, मिनिस्ट्रीज, सब के सब लोग बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। फिल्ट्रेशन के लिए जब हम इंडोटेक की बात करते हैं तो यहाँ पर नायलॉन वगैरह यूज़ होता है, पॉलिएस्टर यार्न, पॉलीप्रोपाइलिन वगैरह, और इन सब का इस्तेमाल होता है टेक्सटाइल स्पिनिंग मिल में, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, पेपर बोर्ड, मतलब आप सोचिए, और हर जगह इनका इस्तेमाल होता है। फिल्ट्रेशन फैब्रिक, इनमें लाइक फ्यूल को फिल्टर करने के लिए, एयर को फिल्टर करने के लिए, वाटर के लिए, डस्ट फिल्टर्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल एंड एज पर रिक्वायरमेंट यू नीड टू सेलेक्ट एज पर। मीन्स फिल्टर्स में भी अभी अगर आपको एयर फिल्टर करनी है तो सिंपल एयर करनी है, कंटेमिनेटेड एयर करनी है, किस लेवल की एयर कंटेमिनेटेड है, उसके अकॉर्डिंग भी
अनेक तरीके के फिल्टर्स अवेलेबल हैं. तो these are all things, wide, very wide scope is there. ओकोटेक को अगर आप देखेंगे आपको लगेगा कि आप वाटर एंड सॉइल कंजर्वेशन के लिए, लैंड रिक्लेमिनेशन के लिए, गार्बेज जियो बैग फॉर प्रिवेंशन ऑफ मड फ्लो एंड लैंडस्लाइड, जो हम जब ये लैंडस्लाइड होता है हिल्स वगैरह में या कोई और जगह पर, तो इस तरीके के जियो बैग्स का इस्तेमाल किया जाता है. ये सब भी टेक्सटाइल मटेरियल्स के ही बने होते हैं, जिनका की काफ़ी अच्छी एजिंग होती है, बरसों तक काम करते हैं. कंस्ट्रक्शन साइट्स पर इनका काफ़ी इस्तेमाल है. ऑफशोर एरियाज में दीज कैन बी यूज्ड. इसी तरीके से बिल्टेक है. इनसे कॉस्ट इफेक्टिव टेम्परेरी एंड सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर्स कैन बी मेड. मैकेनिकल प्रॉपर्टी शुड बी गुड, जो कि बहुत मजबूत होने चाहिए. और ये आजकल मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं. फॉल सीलिंग के लिए, रूफिंग के लिए, कबर्ड्स के लिए, साउंड इंसुलेशन वॉल्स के लिए, पैनल्स के लिए, एक्सटीरियर क्लैडिंग. मतलब आप लोग जितने नए घर देखेंगे ना, इतने सुंदर क्यों लगते हैं, लाइट वेट भी बने होते हैं, क्योंकि ये सब टेक्निकल टेक्सटाइल्स का कमाल है. मेजर प्रोडक्ट्स, होर्डिंग्स एंड साइनेजेस रोज रोज बदल जाते हैं. जो अब हम लोग देखते हैं, जो फ्लैक्सीज यूज होती हैं, वो भी टेक्सटाइल की है. इसका फोल्डिंग नेट्स, जो 3 डायमेंशनल नेट्स होती हैं. ऑर्निंग्स एंड कैनोपीज, टर्पुलेंस, बड़े बड़े सुंदर सुंदर रेस्टोरेंट्स में आपने कैनोपीज वगैरह लगी हुई होंगी. आर्किटेक्चरल मेम्ब्रेन्स, रूफिंग मटेरियल्स, इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स में 3D टेक्सटाइल्स. और इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है फिल्ट्रेशन के लिए. और टर्म्स इंक्रीज द डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स. प्रोटेक्शन, अब आप इसको देखेंगे तो एप्लीकेशन इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स के हर जगह अप्लाई हो रहा है भाई. टेक्सटाइल्स नाम लीजिए, देखिए, ड्राई एंड वेट फिल्ट्रेशन एप्लीकेशन, पॉलिशिंग क्लोथ्स. जो हम आजकल घर में किचन में भी अपने जितने वाइप्स हैं हमारे, वो सब माइक्रोफाइबर्स के बनते हैं, जो कि अपने अंदर डस्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. और अब सुपर एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स के, जैसे जो कॉन्टिन्यू वो होते हैं ना, पैड्स वगैरह, डायपर्स, बेबी डायपर्स, वो सारे के सारे अपने जितना उसका मास है उससे कम से कम 500 to 1000 टाइम्स ज़्यादा वेट अपने में ले सकते हैं. पैकेजिंग टेक्सटाइल्स, ये क्योंकि सब कुछ अवेलेबल है तो बहुत सुंदर दिखते हैं. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मतलब स्ट्रेंथ वगैरह अच्छी है. केमिकली रिएक्टिव नहीं होते हैं अंदर आपका जो भी सामान रखा हुआ हो. हैंडलिंग और स्टोरेज में अच्छा भी लगता है और ईज भी रहती है. रीयूज होते हैं, रिसाइकिल होते हैं, कई सारे के सारे नहीं होते, और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो सकते हैं. इस तरीके के होने चाहिए. तो आप ये देखिए कि इसका फायदा क्या है. इट एड्स वैल्यू, इसे थोड़ा बढ़ा देते हैं. इंश्योर्स प्रोडक्ट क्वालिटी एंड फ्रेशनेस. टेम्पर आइडेंटिफिकेशन, अगर आपका कोई पैकेज मटेरियल है, ऊपर से थोड़ी सील खुली हुई है, हम उसको नहीं लेंगे क्योंकि हमें पता है कि वो गलत हाथ में पड़ गया है. और जो गलत क्वालिटी है, उसको गलत चीज़ें वो अंदर नहीं घुस सकती हैं. एडल्ट्रेशन नहीं हो सकता, कम हो सकता है. प्रोडक्ट की स्टोरी, मतलब किसी चीज़ के ऊपर अगर हम देखते हैं नाम लिखा हुआ गोदरेज, तो हमें पता है हाँ अच्छी कंपनी का बना है, वी कैन यूज़ इट लाइक दैट. ऑफर ट्रेसेबिलिटी, कहाँ से था, क्या था, वो सब पता चलता है. डिस्ट्रीब्यूशन में इजी होता है, इजीली उठा करके दिया जा सकता है. मार्केट प्रमोशन में इजी रहता है. तो ये सब चीज़ें बहुत बहुत फ़ायदे की हैं. So that's all for today. I think thank you. Thank you for such an informative lecture, ma'am. I hope all the participants are benefited with your lecture. Dear students, if you have any query, you can ask, please. मैम से अगर कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिए. Starting of venture.
Students, कुछ query हो तो इसको नहीं Ma'am, I have one question. Yes. Ma'am, actually, I wanted to know, you explained this vast field of technical textiles. Firstly, I would like to know if anybody wants to venture into technical textiles, from which institute he or she can get the required training. And secondly, is there any financial assistance also available for students who wish to venture into technical textiles, any area, be it packaging or eco textiles? Okay. So, with regard to trainings, as I told you earlier also that with the textile ministry, so many areas are associated with it. Associations like North India Textile Research Association, you can note it down. It is situated in Ghaziabad, UP only, and their work on protective textiles. That is their field of excellence. So there, if they want, and not only in the protective textiles, but they offer trainings in all the fields of textiles, like weaving, testing, and this spinning, and what more? Non-woven making, and so many things. Means you name it, and one or the other course they offer. Yes. Thank you, ma'am. और कोई query हो आप लोगों की? Okay, then thank you. On the behalf of KU-IIC, I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed keynote speaker, Professor Alka Goel, for giving his valuable time and interacting with our student. Thank you, ma'am. I would also like to sincerely thank the Vice Chancellor of Kumaun University, Registrar, Director DSB and SRICC and DIC, Mr. Amit Arya and Mr. Pankaj Pathak for facilitating this event. My sincere thanks to Professor L.S. Lodhial, Professor R.K. Pandey, Professor Lata Pandey, Professor Jyoti Joshi, Dr. Anil Best, Dr. Hemchand Joshi, and Dr. Keetki Tara, and all the participants for being with us. Dear participants, we will have second session of this lecture series at 1 p.m. The keynote speaker for this session will be Professor Subhash Chandra, Professor of Law, Dean, Research and Development, and Director, Center for Innovation, Research and Development. He will talk about the intellectual property right for the startup business. See you all at 1 p.m. Thank you. Thank you, ma'am. Okay, bye. Bye. Thank you, Lataji is there. Bye bye. Thank you for providing this opportunity.
A very good afternoon to all of you. I, Dr. Harsh Chauhan, on the behalf of Kumaun University Innovation and Incubation Center, welcome you all to the second session on the Impact Lecture Series being organized by Kumaun University Innovation and Incubation Center. Well, Albert Einstein has said, you can't solve a problem on the same level that it was created. You have to rise above it to the next level. I invite Dr. Chavi Arya, Coordinator Impact Lecture Series, to welcome all our participants. Over to you, ma'am. Thank you, Dr. Harsh. A very good afternoon to all present. It is my privilege to welcome you all to the second Impact Lecture of the second session of this Impact Lecture series, which is being organized by Kumaun University Innovation and Incubation Center at Nainital, Uttarakhand. This lecture series is supported by Ministry of Education's Innovation Cell and All India Council for Technical Education. The Impact Lecture is being organized under the patronage of our Vice Chancellor, Professor N.K. Joshi ji at Kumaun University, Nainital. Our keynote speaker for this session is Dr. Subhash Chandra Roy, Professor, Chanakya National Law University, Patna. Sir would be speaking on the topic, Understanding Intellectual Property Rights for Startups. Every startup has intellectual property rights, which it needs to understand and protect for excelling in its business. And the startup also needs to understand that they are not in violation of any IP rights. I'm sure that sir, with his immense knowledge, will throw light on the topic, and our participants will be highly benefited from his lecture. I welcome you, sir. Thank you. Thank you, sir.
I now hand over the mic to Dr. Harsh. Thank you, ma'am. Well, I find immense pleasure to introduce our keynote speaker. Dr. Subhash Chandra is Professor of Law, Dean Research and Development, and Director Center for Innovation Research and Development, as well as Director Center for Innovation Research and Facilitation in Intellectual Property Right for Humanity and Development in Chanakya National Law University, Patna. Well, he did his graduation and doctorate from TM Bhagalpur University in English Literature and Law. He joined Bar Council of India at Bhagalpur District Court and practiced for 5 years. And today he will be discussing about intellectual property rights for a startup business. Well, I believe all the participants, they will be highly benefited with his knowledge and experience. Sir, without taking much time, I invite you for your keynote lecture. Over to you, sir. Thank you. Namaskar to all the participants and especially Professor Susma Tamtaji, Director of this center, who invited me in this and provided me lecture, provided me opportunity to interact with the all participants. The topic is that understanding IPR for startups. As we know very well, intellectual property rights, it is not a subject matter of today. Rather, it has been earlier from the centuries. But earlier, it was not so marketed. It was not a subject of market. Rather, it was a subject of, philanthropical distribution. As you see that, Chanakya wrote Arthashastra. Did he ask for royalty for copyright? Tulsidas ji wrote Ramcharitmanas. Did he ever ask for copyright or royalty? No. It was for that, for the society, for the people in large. As you see that many scientists invented so many things. James Watt invented his steam engine. Did he demanded patents rights? Or the innovators or inventors of so many things, they never demanded anything. But with the development of industrialization, scientific and industrial development, it became a profession that you are going to, or we are going to invent something, innovate something, develop something. And it has become a full-time job that if someone is developing something, he must have recognition, he must have been paid for that, because for innovation, invention, creation, there is a requirement of investment of time, mind, energy, labor, skill, and judgment. These are the aspects. And when we invest our time, our mind, our energy, labor, skill, and judgment, then intellectual property is created. Intellectual property is a property which is not visible, intangible property, incorporeal property. So we human beings create from our mind that property, which is nowadays legally termed as copyright, patents, design, trademark, and other community intellectual property, rather geographical indications under biodiversity. So many things are there. In layout design, semiconductors and layout designs. So we are giving them term, but actually it is a creation of mind in different directions. First of all, what is property? Generally, people will say that property is a thing, an object,
But legally, the meaning of property is rights in a thing. Suppose I have a mobile, or there is a mobile kept in the shop, mobile shop. Can I say that mobile is my property or my mobile? Answer will be no. The moment we pay the bill and receipt I receive, and along with the mobile, then I say it is my mobile. So I purchased that mobile set. But under the mobile set, thousands of patents are there. Thousands of patents are involved in there. The mobile is running a smartphone. So now whether I am the owner of that mobile or I am owner of the intelligence, innovation or invention inside it, answer will be that I am the owner of the mobile set only. I am not the owner of the invention. I am not the owner of the invention or innovation or anything creation. So it means that physical property is mobile, whereas intellectual property is patent, trademark. Suppose Vivo mobile. Vivo is a trademark. Samsung television. Samsung is a trademark. But inside, I have purchased a Samsung television, and the television, it is mine, the physical property. But inside that, the intelligence, the invention, the innovation, it lies, it belongs to somebody else. So intellectual property is a creation of human mind. Now we see that how it is created and what is its relevance with the startup. And then I will combine the things. Intellectual startup, as our BJP government, when came into power, the startup policy was formulated, launched on 16th January 2016. Startup policy. It is what it is. Whether startup is something new, people are confused. Startup generally start. Stand up, two words were there. Start up and stand up. We have to stand up on our own. We have to be self-reliant. We have to be self-dependent. We have to begin something. Startup means we have to begin something. What to begin? Begin business. But startup is nothing but unless and until there is a LLP, limited liability company, unless there is a partnership firm, unless there is a private limited company, or under the Companies Act, unless there is a society registered one and doing business and registered along with DPIIT, Department of Industrial and Industrial Promotion, the Government of India, it is nothing, not a startup. Therefore, we have to start a business and then it has to be registered with the DPIIT, the Government of India under Ministry of Industry, Government of India. So now we have to understand intellectual property and rights. Rights means the interest recognized and protected by law. Intellectual, that it is not available anywhere. It is not in a physical form. It is a creation of human mind. Property, rights in a thing, that is property. And rights itself says that interest recognized and protected by law. So when we invest our time, mind, energy, labor, skill and judgment, we generate rights in the incorporeal creation. Suppose someone is thinking about invention. How invention is possible? Unless and until the person who is an inventor looks into or observes the problems of society, and he is very, very sensitive as well as sensible also, he cannot create anything. He knows the requirement of the society and he starts thinking how to resolve this problem. And out of those thinking, he starts doing the work. He starts making experiments and he finds something
and then he tests all these things, experiments, proves that yes, with the help of this apparatus, now we can resolve the problem. Take for example, earlier washing machine, it was not drying the clothes, but nowadays washing machine is automated. Now you put the surf only. It is automated in taking the water intake. It is automated everything, that it will wash and then it will clean, then it will dry up. Everything it will do itself. Think that it was the imagination of some people that if it is automated, it would be better, because we fix the time, then we can engage ourselves in our work, day-to-day work. So in this way, they will be benefited, they will use their time will be saved, and in single time and same time they can have a multiple work. As we have now computer, a lot of work we are in a position to do. This internet online services we have learned, and you see that pandemic has taught us how to interact and talk on the online, and it has done a marvel. So intellectual property is a very essential thing. But when on May 2016, intellectual property policy, national intellectual property policy has been taken up by the government of India, and 7 criteria have been made in the intellectual property policy. The first criteria is that IPR awareness and outreach promotions. IPR awareness. This is the first and foremost thing. We must be aware of that. But whether we are, again, as in the beginning, I had said that whether IPR is a new concept. Of course, it is a new concept in new form. We were knowing also intellectual property, Bodhik Sampada. But we were unknown or not interested in marketing of those property. So the now intellectual property awareness requires that awareness for creation, innovation, as per the slogan given in the new National Intellectual Property Policy, Creative India, Innovative India. At the same time, it is that now it should be marketed, it should be commercialized, as many people are there. They are doing something, but they are not in a position to have a market. So 2 aspects. We have to work on 2 hands. Creativity, awareness, at the same time, facilitation or marketing of those things so that they can earn money. The creator must earn money also. Otherwise, why shall they create? Because as earlier I told you, that creation requires investment of time, money, mind, everything. So that's why Creative India, Innovative India. And this is why awareness has to be created. Awareness creation is most important. So in awareness creation, what is the understanding towards that intellectual property? Understanding towards intellectual property, first is that we must understand what is copyright, what are the functions, as well as how to protect the copyright of a owner or author. Secondly, patents. That is, someone is inventor, he must know how to get it patented, how to get benefit, and how to market it, how it shall be beneficial to the society. Likewise, trademark, design, layout design and semiconductors, and community intellectual property, like geographical indications, traditional knowledge, biodiversity. So all these things are there in total that we are talking about. Now in this awareness issue, awareness of what? What should be made aware of? Generally, our mind is fixed that we should create awareness among the people, among the students, among the intellectuals related to copyright.
Okay, one aspect is that, or related to patent. But one thing is very important, and that is that creation, for what awareness, what type of awareness? Here is a question, and the answer will be that we have to create economic value. First point. Second point will be we have to extract economic value. So creation of economic value and extraction of economic value. As you see that someone has written a book, and if he is sending the manuscript to the publisher takes undue advantage. The author is given minimum royalty annually per annum on per limited number of books, whereas the publisher, he is earning a lot. So that's why other channels, other business channels, peoples, they are getting the benefit. Whether the author is getting benefit? Answer is no. As we are the teachers, we know very well that whether we are getting benefit, we are not getting benefit. It is the publishers, it is the businessmen, the booksellers, they are getting benefit. Therefore, economic value, that the teacher is writing a book. What is the objective of his writing the book? His objective is to get promotion. He has nothing in his mind, commercial mind, that he is going to sell the book in the market and earn profit as a retirement benefit or as a business benefit. This aspect has to be made aware of, that whether a teacher, when he is a writer, he is writing a book, he has intention to create economic value as well as extract economic value or market that economic value also. Here requires awareness. Another point is that many people are that they are, they have hobby, suppose taking of photography. Now, that photograph can be sold in the market, can be circulated in the market, can have economic benefit. But where to have economic benefit? Someone, Mr. A is a photographer, he is taking wildlife photography or the natural photography or some other types of photography, and he wants to get it registered and get benefit out of that. So creation of economic value, in terms of the photographer, neither he is knowing how to create economic value, he is not knowing the economic value. What is the meaning of that? So awareness towards this is that what is the meaning of economic value in that photography. At the same time, where that photography can be sold, can be marketed, and economic gain can be obtained. So awareness for this. But before that, I would like to say that awareness among the educational institutions, awareness among the faculties, awareness among the students, it is essential. For what? What is the goal? Whether our goal is only to provide degree, generally it is so happening that students are taking admission, and after certain class lectures, after certain period of time, the examination is conducted, half-yearly examination or annual examinations, and the students are distributed degrees. What is that? What is the benefit of that degree? And we know very well that after getting that degree, graduation, post-graduation, or in any discipline, what is happening? There is a long queue of the unemployed people. So what for education? And this intellectual property, we are trying to know about the creative India and innovative India. So what for education? If we are talking about the education, it means education is a cultivation of the mind. We want to create knowledge. That education gives three things: knowledge, first point, second point is skill, and third is wisdom. Three things that knowledge is providing, education is providing: knowledge, skill, and wisdom. So what is knowledge? We have to think over. Generally people say knowledge means we are knowing something, jnana, that is knowledge. But what it is exactly?
we have to ponder about. Just for example, with a simile or example, we can understand what is knowledge. As presently it is a paddy season, rice season, cultivation season, and in which we spread paddy grains in the field. We prepare seedlings, and then the seedlings are planted in a smooth, muddy soil. So there is a cultivation of the soil, watering of the field, at the same time compost, fertilizers, manure, etc. we put down there, and then we plant seedlings. After a few days, the seedlings start growing. Then it is irrigated, watered. If there is a worm, then pesticides are there. Again, you see that there is a weeds, then we have a weed out from the field, from the farm, and finally the grain of paddy comes, and that is that crop that is harvested. So that grain in the paddy plant, that grain is knowledge. So after the cultivation of and all these processes, we have grain, we produce grain. Likewise, knowledge, it is after the thorough cultivation, thorough understanding, thorough reading, and knowledge of a problem, and then our introspectiveness, experiments, etc. we find out certain concrete solution, that is knowledge. So education provides us knowledge, and second is skill, how to use that knowledge. That is also most important one, how to use the knowledge. What is happening nowadays, that we are teaching so many subjects. In each and every subject, it has entrepreneurial aspects. Generally, what is happening, that we are teaching in the class, examinations are conducted, we ask questions, students write answers, and they are declared successful. Yes, they are successful. They can be provided degree. But the fact is that whether, and if they are successful in a particular educational result, why not they are successful in their private life also, in their economic life, in their social life? The answer is that success does not mean that you got pass in the examination. So first of all, teaching should be innovative one, and this is the most important aspect of our intellectual property rights. Innovation. Teaching, in teaching institutions, innovation is required. What is innovation? That can I teach in a better way? Suppose I am interacting with the student today, I should introspect after the class that whether my interaction was proper. Could it have been more better to or convincing to the students? Could I resolve the problems of the students? Innovation means something better and better. Innovation is required in teaching. But the fact is that we teachers, I am sorry to say, we teachers are not introspecting in this aspect of innovation, that the teaching should be innovation, innovative teaching. That every time there should be something new, something palatable, something it should have an objective that it is going to create entrepreneurship. Entrepreneurship is very, very important part of our teaching. What is entrepreneurship? Creation of the economic value and exhaustion of that of economic value. So whether we are going to teach in this way, we are teaching science papers, physics, chemistry, biology, etc., or social sciences paper. What is the objective? What is the outcome of learning? Here, the teacher has to do exercise and convince the student, as well as on the skill part also, what is the implementation of the same and how it can be economically exploited. So the teaching
requires innovation, and innovation for entrepreneurship. In this way, we can create in every subject entrepreneurship. As earlier, I can take you to 30 years ago, at least 30 years ago. I was sitting with my teacher of English literature, and just beside his quarter, there was one quarter of a Hindi professor. So he had come to his house, and I had interaction with him. I was unknown about the progress in Hindi literature. So he started talking about the functional Hindi. And I knew on that day that yes, if someone is learning BA honors in Hindi or MA in Hindi subject, it has a scope, economic scope. There is a requirement and one can have a benefit. So entrepreneurial education, just I gave you example, is available everywhere. It is the teacher who have to create the module, and he has to focus and convince the student, encourage the student that what are the skill required, what things you can do with your subject. Suppose a person who is a student of geography or a teacher of geography, he has a scope in tourism. A person who is a history, earlier people were thinking that history is a subject, just one can have a knowledge of past stories, events. But the thing is that history has a marvelous subject. Now, so many people are engaged in museum and services, tourism and many other things, tourist guide. It has an implementation part, and there is an economic significance of the same. So creation of awareness towards the intellectual property creation is essential. Innovation is essential. Awareness for innovation in each and every direction. As we academician, as madam, I had interaction with madam, and we all know, we the teachers know that we have to innovate ourselves. We have to introspect ourselves that in my discipline, in my subject, what can be the innovation and what new things, entrepreneurship can be developed, and how it could be taught and encouraged to the students towards all these aspects. So awareness program and generation of intellectual property rights. Awareness is one aspect, generation or creation. As you see that during pandemic period, people had a lot of time. And when they had a lot of time and Geo mobile was there, they had creativity also. They created a lot of stories, dramas, poetry, etc. So generation of the knowledge. How to generate, how to create. First innovation, awareness, then innovation, and then generation. And then there shall be marketing, of course. But generation of the knowledge, education is the first step towards the generation of the knowledge or creation of the knowledge. The teacher and the taught both are creator, generator. If you remember that there is a 2000 Act, public funded intellectual property rights bill was there in 2008. Our Kapil Sibal was the minister at that time and had produced that academia should have integration with the industry. What is happening today? We are framing the curriculum. That curriculum is limited for general class lectures. It has nothing to do with the society, nor to the student, nor to the to any industry. So the policy was that there should be, whatever we are teaching, we are reading, we are learning, it should have personal development, personality development, development of the mind, creativity development, innovation development. Second, it must have certain connection with the society. Means whatever I am going to read, I must know that this aspect or this subject I can contribute to the society. Society will be benefited out of my knowledge. It is the duty of a teacher to focus. So
this is essential part, and if we are not aware of all these part, then we are lacking. So generation, and then marketability comes, legal and legislative framework, the third policy objective of this national intellectual property policy. Here lies the copyright, trademark, design, patent, and you know very well that time to time there is amendment. In invention there is amendment also, and it has been added one aspect, that invention, that it should be new, non-obvious, novel, and it should be inventive step and industrially useful. So most important part is that inventive steps means technological development. But here one point has been added in the amendment, that not only technological advancement or economic significance. So if you are innovating, if it has economic significance, of course it shall be registered as a patent and you can have a benefit. So innovation is most important, and this is why I said two words, that is the creation of economic value. Creation of economic value. And economic value is a term which has been explained in law of insurance. Economic value means income generating capacity. This is the meaning of economic value. So creation of economic value and exploitation of the economic value, or marketing of the economic value. That's why legal aspect is there. Copyright. We have to create where lies copyright. What is copyright? Right to make copies, more than one copies. So that we can distribute it, we can sell it, we can market it, and we can earn money. So copyright, right to make copies. But of what is the subject matter of copyright? That it should be original, literary, dramatic, musical, sound recording, cinematography, artistic work, all these things. As we know very well, that design, it is not separate legislation, Design Act. Earlier it was with the patents. So the design is also important, and our industry depends on it. The creation of the design, what we purchase, design of different things. We go to the market, we purchase the thing, no doubt, but with a design. What is design? It is solely tested by our eyes. The thing, the shape, size, color, combination, many other things which my eyes likes it. Another person may not like it. So the design is so important. Even the sweets have a design that attracts us, that attracts our mind, and we purchase and use it. Cloth design, specs design, watch design, ornaments design, so many things are there. But if someone is a creator of design, okay, he must have a marketing knowledge also. As someone is the author of a book, dramatic book, musical book, poetic book, he must have a knowledge how to exploit it. As in India, we know very well that we the teachers, we the creators, authors, depend on the publishers. And this is why, and we are not knowing how much royalty we should have, and we are not being protected. Maximum share it is taken by the publisher. After some time I will talk to you. Sorry, I am in the class. So there is no awareness for self-publication, authorship and self-publication. And as in USA, as in UK, there is a maximum now authors are coming for self-publication. They are earning, they are creating, and they are selling, and they are earning. Authorship has been developed is developed now as a profession. Here in India, authorship still is not a profession. Barring few, writers, script writers, poets or singers, lyric writers in the Bollywood industry, outside
it is nothing. Even the authors of the Bollywood industry, they depend on the filmmakers. So this is why novel writers, whether they are publishing their themselves, answer is no. They depend on the publishing house. Likewise, sculptures, many peoples are there. They are creating. Whether they have their own market, whether they are launching, they have to depend on others. They may become, in this way, they become just like a wage earner. They are not doing anything. So, legal framework. Invention, still India lacks petty patent. China, we are, envious of China. We are saying so many things against China. We say that it is a Chinese goods. It is very cheaper, but short life, very short life. Just if you are purchasing a Chinese toys, after 2 days or 3 days or even 1 hour, it will be useless. In Deepavali festival, we have Chinese bulbs. We have so many decorative things out of China. China is producing, China is marketing. But you see that why China became so much industrial giant? What is the reason behind? It is because of the patent policy. In China, there is one application, 2 patents. But in India, one application, only 1 patent. 2 patent means that if the first point is that the inventive steps could not be proved and it is not as per the test of the inventive step, okay, you will be allowed petty patent. That is for 7 years. And those patents are cheaper, available, and they are used by the MSME. And you know that a lot of MSME is working with that innovative ideas, and the Chinese goods are cheaper. And it is all over the world, it has a market. Why not the government of India is taking petty patent policy? We have only 1 patent, and which is very costly, and it takes time taking also. So when it comes into the market, it is so costly for 20 years that the small scale industries and the startup cannot purchase it, cannot avail it, and this is why they are lagging behind. And this is the reason that we are creating wealth, but we are unable to exploit it, unable to market it. So we require also at least 1 application, 3 patents. Third, I would like to say that, trade secret. As for the example, I would like to draw your attention, Coca-Cola, the formula is trade secret. It is not patented. Everlasting it is. So why not 1 application, 3 patents or 3 registration? That is 1 for the major patent, 1 for the major patent, that is for 20 years, another for innovation or economic significance as per the patent provision for 7 years, and third, that is the trade secret. Because if we disclose, then it is confirmed and registered under the patents law. If we do not disclose our innovation or invention, then it is a trade secret and it has a common law protection. So we have to go towards these 3 policies, then the startup policy, MSME policy, stand-up policy, and resilient India, Atmanirbhar Bharat can be successful. Likewise, I would like to draw your attention about trademarks. Trademark, it is, there is a, I cannot say that it is intellectual property, but yes, it is intellectual property. Because we are creating logo, letter, number, figure, etc. We are creating certain mark which differentiates my goods with that of the other goods. And consumers believe in that good, understands that good and purchases. So here the producer has to maintain the quality and standard so that the consumer may always be attracted to that goods and consume the goods and be beneficial. So that is a significant point. So trademark is intellectual property, at the same time vehicle
to the copyright, patents, and other things. As for example, I would like to say that medicine, Covadex, what it is? Because of vitamin B complex. Generally, we know what is Covadex. It is a trademark. It is not the chemical name of the medicine. So, with the help of that Covadex, now it is being sold in the market. So, it is a trademark. So, trademark is very, very important. A lot of goods, always everything is available in the market, and in the name of the market we say and purchase the goods. So trademark protection is also very important. How to register the trademark, and what shall be protection? Trademark Act 1999 is there. Now we have trading services also. Protection. If the trademark is not registered, what will happen? You know that if you read the trademark and you have got it registered and you are not using the trademark for 5 years, any other person can start using the trademark, and then what will happen? He will take adverse possession. Adverse possession, he will simply say, those who has infringed your trademark, he will simply say, sir, yes sir, it is the trademark of Mr. X. I have started using that trademark, but sir, this trademark was unused for the last 5 years. He has not been using that trademark for the last 5 years. So the principle of adverse possession of land, as we know very well related to the land property, that principle is incorporated in the Trademarks Act also. That you have created the intellectual property, trademark, but you have to use it. If you are not using it for 5 years, then you will lose. Some another person will start using it and the court will approve it also. So we have to understand how to get it registered. If it is not registered, how to protect it. Unregistered trademark, it has protection under common law principles. Under contract, it has a protection. But one condition is that it must be in continuous use. Likewise, layout design, you know that NILET, National Institute of Technology, electronics technology, has been created in India, established in India in 23 states. In Patna also, perhaps in Uttarakhand maybe there, I don't know. But things about electronic goods, these are the centers the government of India has established for the creation, innovation and development of these electronic goods and the marketing of the same. But whether these institutions are working properly, we the teacher as innovator, as IPR centers, we require to integrate with these institutions also. Train these students, take them there that what is happening, what type of innovation you can do and you can market, you can earn profit. So legislative framework, then administration and management, how to manage, how to administer, means enforce law. This is also very, very important. Nowadays, intellectual property management is being taught also. In somewhere courses, IGNU also, intellectual property management, one module is there, that how to manage these things. The startup, the MSME, the entrepreneur requires to understand the management. And it is nothing that investment of intellectual property, at the same time, what is the economic value of the same, and valuation, as suppose you have a land property or building property for income tax purposes, you value it every year. Likewise, what is the value of intellectual property? Suppose there is a sports company, you are investing, you are purchasing the technology, inventive technology, you have purchased in order to manufacture various sports material. Secondly, you have a trademark. And in order to protect your trademark, you have to work over, you have to invest there. As sleeping idle, you cannot protect your
trademark, protect your copyright, protect your patents. So you have to invest and you have to manage, you have to keep vigilant. You have to see the competition in the market with reference to the Competition Act. So many things are there that we have to train the students by visual experiment, physical verification. They must be taken to there. They must learn out of doing, learning by doing, and then entrepreneurship can be groomed, can be developed. And there is a fifth, that is the commercialization. How to commercialize it? Facilitation center. As you see that we have visited Uttarakhand, and there are so many small scale industries. How to market it? There is lack of marketability. As our Prime Minister has given the slogan, be vocal for local. A lot of things are there. Geographical indications are there everywhere, available. Whether we are vocal for the local, it is also most important aspect of intellectual property, because it will give boost up to the community intellectual properties. So in this way, what we see that the ultimate objective of the intellectual property is the creation of human capital. The institutions have been set up for the creation of human capital, as the industries are making some goods, rendering certain services, but we, the educational institutions, are creating human capital. And this is why I would like to say that education itself is a intellectual property. Jnana dhanam mahadhanam, bauddhik sampada. So if we are learning the subject matter objectively, with reference to its social implication, with reference to its industrial application, with reference to my own personality development, understanding, innovation and creativity, we can create human capital. This is very, very important. As just a few days ago, there was a discussion that some parties are secular parties, some parties are communal parties. I don't agree to this. If we are secular, it means we respecting others. But whether we have a courage to respect? Answer is no. We have to be human first, then we have a courage to respect. Now the question you may ask, whether we are not human. Answer is that yes, we are not human. We are in between animal man, man and human. Because animal has an instinctive drive, that is that food, hunger and production, reproduction. Man by nature is selfish, self-centered, quarrelsome, fighter, kumati, what is known as. But human, generous, udar, ayam nija paroveti ganana lagu chetasam, udar charitanam tu basudhaiv kutumbakam. So man is a stage of ego, man is a stage of self-centeredness, man is a state of chaos, whereas human is a stage of our development of high one, that we are generous. We love each and every person. We are happy to see others happy. We are not envious. So the purpose of education is human capital, means develop one internally, academically, innovatively, as a human first. And that's why, and then if someone is a human, creative in his subject matter, then he will be himself as an asset. And he will be a capital useful to himself as well as useful to society also. So the very objective is very, of education is quite clear. But the thing is that how much we are doing, what we are doing, it is obvious. Each one of us know all these things. Therefore, this innovation dialogue that human resource management has created, and Madam Susma
has given us opportunity to learn and share the views with reference to startup and intellectual property rights. So we can understand intellectual property rights by doing the thing, creating the thing, developing ourselves, and whatever we are creating that under the copyright or trademark or design or layout design or any other subject or traditional knowledge, whatever, we require to understand also how to market it, how to exploit it, how to get benefit ourselves as well as to the society. So in this way, we can do something. And a startup is nothing new. It is a company. It is a company which has to be registered with the DPIIT. And there are so many provisions for seed money, for benefits, any other thing, many other things are there that we can do. But before that, we have to understand intellectual property rights also. So now I would like to share with the participants what I have presented. Any query, anything, any observation, I would like to invite. Thank you, sir, for sharing this valuable information. Sir, we have a query from Kiran Tiwari. She wants us to explain how to register trademark or brand, the required documents and registration fee and time it takes and validity and all. For the registration, application has to be made before the patent office. Patent trademark design office is there. In New Delhi, Mumbai is there. 5 offices are there. And there you have to submit along with the graphical design of your trademark. And after that, there will be query. It will be published in the journal of the trademark, whether there is any objection. And if there is no objection, then that trademark will be registered. So trademark, if it is registered, TM is given. Otherwise, it is a trademark. You can use it without registering. You can use it. There is no, hard and fast that without registration, you cannot use it. Even if it is registered, as I told you that 5 years, if you are not using the trademark for 5 years period, then it will be of no use at all. Any other person can start using the trademark and it can be taken as an adverse possession. As land is taken, suppose you are not using your plot of land for 12 years and not caring, and any other person takes the possession, then you cannot, displace him. By virtue of adverse possession, he will be the owner of that land property. So the same thing is here in the trademark also. Thank you, sir. Kiran ma'am, आपकी और कोई query हो तो please you can ask. Any other query from any participant? हेलो सर, गुड आफ्टरनून। सर, मैंने एक छोटा सा स्टार्टअप किया है अभी, तो मैं ब्रांड का भी पूछ रही थी कि अगर हम इसका ब्रांड रजिस्टर कराते हैं तो ट्रेड और ब्रांड एक ही है क्या, ट्रेडमार्क और ब्रांड? हाँ, उसी को लोग बोलते हैं ब्रांड जो बोलते हैं, या ट्रेडमार्क जो भी कहें। एक्चुअली ट्रेडमार्क बिकम्स अ ब्रांड इज अ पर्सनालिटी. Brand is nothing but a personality. What is your trademark? It is a mark, letter, figure, number. So when you are making or manufacturing the goods or rendering the services in such a qualitative way, and you are maintaining the quality, protecting it, then it becomes a brand. People call it a brand, although it is a trademark. The same thing is there. Okay. Likewise, as you are making bread one, that if it is a qualitative one, people like it, consumer like it, and they demand it. The more and more you are making, at the same time, you are maintaining the technology, how you are making. Not only the figure, letter, number only. As you know, in the market, there are so many persons to make it duplicate. So you have to maintain that. And if you are maintaining, then you become a brand.
that trademark becomes a brand. Okay. We don't require separate registration for the No, there brand. is nothing registration for brand. There is registration for trademark only. And most importantly, as I told you, that how people suffer from the infringement. That is the two things are there. If you are registered, you have a protection under the Trademarks Act for infringement. If it is not registered, you have a protection under principle of layoff, principle of passing off. There is a protection under the law of passing off, and the law of passing off comes under common law principle. Passing off means I cannot pass off my goods in your name. So passing off policy is there, protection is there under unregistered. Although what happens that if it is unregistered, then the remedies you know very well in the court legal system, delay is there, lengthy process is there in the common law courts. Whereas in the trademarks, you have a quick protection. This is the only difference. Otherwise, there is no difference between the registered or unregistered. You have to be, the startup has to be very, very active, aware of the technology you are using. At the same time, the letter, number, figure, whatever the color of the mark. Okay. Okay. One more thing, sir. Sir, as you had told that we should have made registration in DPEIT, something like. Okay. So, but I have registered my startup there in MSME. So, is there any difference in that? No. If it is a startup, you have to register with DPIIT. MSME is another department. Startup has another, so you have to get it registered with DPIIT. You can send application there also, and you can get it registered. All right. Thank you, sir. Thank you so much. Any other query? Thank you, sir. Thank you for sharing this valuable information. And now, on the behalf of KU-IIC, I would like to thank Honorable Vice Chancellor of Kumaun University and the Registrar, Director DSB Campus, SRICC and DIC for facilitating this event. And thanks to Professor Lalit Tiwari, Dr. Dipakshi, Dr. Hem Joshi, Dr. Anil Best, and all the participants for being with us. We are also thankful to Ministry of Education and AICT for providing financial assistance. Sincere thanks to all my team members, Director KU-IIC, Dr. Shushma Tamta, Dr. Neeru Lodhial, Dr. Geeta Tiwari, Dr. Chavi Arya, Dr. Mahesh Arya, Mr. KK Pandey, Mr. Anubhav Mehra, Dr. Nandan Singh Mehra, Dr. Naveen Chand Pandey, and Mr. Inder Rotela. Thank you everybody. Thank you, sir. Thank you. Thank you.